Hello and welcome back to Chasing the Target. Sorry for the delay. हमारे लोग already पहुंच गए. हमारे viewers Ashish bhai, Chirag, Punter सब आ गए. Sorry for the delay. I'm still waiting on my co-host, but I said I'll start the show. Sorry, I'm also late. Yeah, we're discussing the India versus Sri Lanka. Second ODI, India winning by 4 wickets. Rahul, the match winner, staying there till the end and making sure he guides this team to a series victory and playing with maturity and responsibility, playing according to the situation. No rash shots, Chirag bhai, and he made sure India won. And shout out to Kuldeep Yadav. I think Kuldeep Yadav, we've been backing him for a long time now. He and the way he's delivered both with bat and ball in that test match as well, and now this one-day game, outstanding. His spell was game-changing for me. It allowed India to restrict Sri Lanka to a low score. It wasn't that easy of a pitch to bat on, as you saw in that India innings as well. Under lights as well, it wasn't easy, but even in the beginning, like when Sri Lanka were batting, it wasn't the easiest pitch, but Kuldeep made it even tougher. The way he was bowling, his variations were outstanding. Indian standard टाइम के अकॉर्डिंग चलते 1 बजे बोले तो 2 बजे आते हैं. ऐसा कैसा चलेगा भाई? सॉरी मेरी गलती थी. मगर आ गया. अब हम आ गया. मैं फैज के लिए वेट कर रहा हूँ जब तक बात करेंगे, डिस्कस करेंगे मैच के बारे में. And if you look at from the start, Sri Lanka got off to a decent start. I felt, opening stand acha tha. Then Mohammad Siraj, Mr. Power Play, coming in, getting the breakthrough, and then the spinners Kuldeep and Aksar doing the job. One thing that I noticed about Kuldeep's bowling, his he had a quicker one in him. One ball was going over 100 kilometers per hour, and then he flighted it when the new batsman came in. So uska variation in speed was acha tha, control, and this is what you want from your leg spinner. You want wickets, and that's what he got. Clearly, he's India's number one leg spinner right now, and they have to stick with him going into the World Cup. Bahut acha spell tha Kuldeep Yadav ka, and I really enjoyed it. I'll be very honest with you. Aksar Patel always chipping in. He's dangerous whenever there's a bit of spin on offer. So a very good spell from him as well, Aksar Patel. And I'm just looking at the scorecard from Sri Lanka. They'll be disappointed because Avishka Fernando, Nuendu Fernando, he was on debut today. He got a 50, and the way they started, it was a very good start. Kusal Mendes as well contributing. So all these guys got starts. 20, 50 and 34. उसके बाद जो लाइन लगी, फिर एंड में जाके Velelage 32 of 34, and Velelage is a proper all-rounder. He was the under-19 captain for Sri Lanka in the last World Cup, if I'm not mistaken, and this guy's a proper all-rounder. He's going to be a very good cricketer. If you see his technique as well, straight bat, defense bhi achhi hai, shots bhi achhe hai uske, and watch out for him in the future. I think he has a bright future in Sri Lankan cricket. Karuna Ratne and Rajita also chipping in, man. This India has a problem in wiping out the tail. Phir se, like, ab 215 bahut zyada de diye. Jab you had them at a particular time, scored tha 177 for 8. Ab under 200 nikalo, execute your plans properly and be ruthless and do that. Like, this is what championship winning teams do. They don't let you go and score extra 30-40 runs free mein. Finish it off, cutthroat hona chahiye, and India again lacked that. And you saw, like, in their innings, it wasn't an easy chase, so you need to cut the runs to a minimum. ऐसा नहीं है कि 215 आराम से chase हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. Pitches अलग अलग रहते हैं, और ये pitch उतना आसान नहीं था. 250 was probably match winning on this pitch, or be very competitive. तो उस हिसाब से आपको खेलना पड़ता है pitch के हिसाब से. And whenever you get that opportunity, when you sniff blood, you have to go for the kill. You can't just let the opposition get some free runs and have something to play with. And that's exactly what Sri Lanka had. They had a score that they could fight, and they fought. And I felt Sri Lanka did play well in parts in this game. But of course, their batting, especially the middle order and the top order, once getting starts, you want them to convert. Conversion nahi hua. They'll be disappointed with that. Also, you have to give credit to the opposition, and here it was Kuldeep Yadav. It was a brilliant spell. I really enjoyed it. Excellent bowling from him.
Umran Malik on the expensive side along with Mohammad Shami, but Umran Malik also picking up a couple of wickets. He keeps getting Hasaranga out in this tour, so that's one free wicket for him. He always gets that wicket. Akshar Patel again, he just bowled the 5 overs, economy of 3.2, बहुत अच्छा economy था. KL, Are Ibrahim Bhai, welcome. KL has saved his ODI career for timing, man. What a match-winning performance from KL Rahul under pressure. With that strike rate, yeah, I'm not going to talk about that strike rate right now of KL Rahul. Lekin it is what it is. He stayed till the end and won them the game. Whether this is good enough for him to be in the 11, that's another question. Lekin I feel that it was, according to the situation, he did what he could do. मेरा कैमरा ब्लरी है नहीं, वो लाइट नहीं चल रही थी पीछे रूम में, तो वो ये वाला लाइट कर रहा हूँ. मे बी that's the thing, but yeah, when Faz comes I'll go off and try to fix it. KL has saved ODI. Yes, I took this. And yeah, whoever is joining us, thank you so much. Make sure you like and subscribe. और जो भी सवाल है comments है भेजते जाइए. Let us know your thoughts on the performance on KL Rahul. Should he still be given a chance now? I don't know if he's going to play the next series against New Zealand because there are rumors that he might take a break. इंडिया को चेस में दिक्कत आ रही है, बिल्कुल आ रही है. लाइक अगर मैं चेस पे आऊंगा, अभी चेस उतना स्मूथ नहीं था इंडिया की तरफ से. लाइक आप देखें, लाइक बीच में तो लग गए थे. आई थिंक रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल जो स्टार्ट किया, अच्छा स्टार्ट था, मगर वो कन्वर्ट करना, रोहित शर्मा लूज शॉट आउटसाइड ऑफ स्टंप, शुभमन गिल ट्राइंग टू पुल इट, वो भी लूज शॉट था. विराट कोहली got bamboozled with a beautiful delivery. I haven't seen Kohli get beaten like that in terms of clean bowled. मेरे को तो याद नहीं है. If you guys can remind me, let me know. I normally he nicks it off or something like that, or he tries to cut it and he gets bowled, but like aisa, like all ends beaten, I don't remember. If Chahal is fit next match, does he come back or Kuldeep stays? I say Kuldeep should continue as he earned the opportunity to play regularly. If Kuldeep does not continue, I don't know what to say, bro. Look at his performance in his test match. In the last test match, he's picked up a 5 for. He was man of the match over there. Now he's again picked up 3 wickets. He contributed with the bat. What more do they want from him? He has to be picked. Kuldeep Yadav. He is India's leg spinner. He's bowling so well, and you see the difference. I'm not trying to put Chahal down, but Chahal has not been in that form. It's not been peak Chahal right now. Kuldeep is playing. He's back to his best. He's on that level now where again batsmen are having trouble with him. They're not understanding exactly kidhar pitch ho raha, ball kaisa turn ho raha. They're finding it difficult. Even that cotton ball that he got, the batsman was completely deceived both off the pitch and in the air as well. So उस हिसाब से अगर आप देखो, Kuldeep deserves to play and he needs to keep playing. अगर आप उसको निकाल देंगे, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा. वैसे अगर उसको लेके आएंगे और फिर छोड़ेंगे, लेके आएंगे, छोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा, राइट? It's not going to work like that. KL winning a match for his team, is it good or bad? Now he will be knocked out, and you know what will happen in the World Cup. Chirag bhai, I want to know your thoughts on his innings just in today's context. Because the strike rate was low, but do you think it was a sensible innings? Did you enjoy that innings? I don't know if you'd enjoy it, but when it comes to is it good or bad, look, it does it makes it difficult to take him out of the team after this kind of innings because he was the last batsman there. There's always possibilities that he might fail in big tournaments. That's still there. We haven't seen what he's done in the World Cup. KL performing today, need to save it for after his after marriage series में रहती है. कुलदीप ने बैटिंग पे वर्क किया लगता है. ये भाई बिल्कुल सही है. आप टेस्ट मैच में भी अगर आप देखें और अभी वनडे मैच में भी, देयर इज अ डिफरेंस. ही लुक्स मोर कॉन्फिडेंट इन हिज शॉट्स. फ्रंट फुट भी अच्छा रहा उसका, बैक फुट भी अच्छा खेल रहा, एंड ही इज बीइंग एबल टू read the ball very well now with the bat. He looks confident, Kuldeep, and he's playing some shots as well. भाई बहुत काम आ रहे थे जब अकेले रहते, तो हमारे दूसरे जो को होस्ट रहते हाथ दे देते हमारे को. जोकिंग मैन, जोकिंग. व्हाट्स अप बडी, हाउ आर यू? चिकन खा लिए, जिम विम हो गया, सब ठीक है भाई? सब हो गया. इतना मेहनत करे तुम, 4 शादियां नहीं करे तो मैं आई डोंट नो मैं क्या करूंगा. इतना मेहनत करे तो 4 बीवियां जरूरी है भाई. आई डोंट सी एनी प्लेयर resting or getting dropped for the next game. If that happens, then Shami should be rested because we need him for the test series and other series. Good point. Yes, Faiz, your thoughts on the match? KL Rahul, man. मैं क्या बोला लास्ट गेम में? He was looking in flow and then आके last man standing today, bro. क्या बोलते? नहीं जबरदस्त सिचुएशन के साथ आपका ही था टाइटल, मतलब आपका आइडिया था. नॉर्मली डेफिनेटली
सिचुएशन के हिसाब से उन्हें खेला एंड मैं वही बोलता हूँ, जब सिचुएशन राइज होती है ऑब्वियसली ही टुक 100 balls, दैट्स वन थिंग, बट डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस एंड ड्यू एंड एवरीथिंग ही प्लेड फैंटास्टिक। आई मीन अगर हार्दिक पांड्या खत्म करता था तो अलग एंथुजियाज्म रहती थी मेरी आवाज में, लेकिन केएल राहुल यस ही प्लेड गुड गिवन द सर्कमस्टांस, बट अब यही है कि भाई ये बढ़ते पे अब फिर उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में फिर कंसिडर करने की नौबत आएंगी। एक इनिंग्स देगा, फिर नेक्स्ट इनिंग्स कब आएंगी? Will it be a consistent run of things, because he's not going to be in action again until Australia It's going to be in after action, the right? series? So is it I true mean, that he's going to be in action, but he's going to play one-on-one, right? So it's not going to be like is that. it true that he's taking time off? I don't I don't know if it's 100% confirmed. Is it confirmed? It is confirmed mostly that he won't be in the T20 squad for the thing because of his marriage. अब उन्हें back out कर दिया, मतलब then we T20 तो can't say वैसे भी much, नहीं है but like उन्हें, वनडे का बोलो, T20 का तो वैसे भी नहीं है उन्हें। उन्हें कहीं भी खेल लेता, भाई नहीं बोल सकते, but one day का भी no idea अभी, as of now there's no confirmation, but Yeah, there's no confirmation yet, but I think that's the way we're heading right now. We're assuming that because of reports, but I don't know if it's 100% confirmed. Is this first from UFC Gym? this is first from UFC Gym कहते। हाँ आशीष भाई, क्या हो गया भाई? आज किंग बेचारा आउट हो गया। हार्दिक कब गेम फिनिश करेगा? मेरे को एक सवाल का जवाब दो। This is not like I'm not trying to create an argument here, or maybe I am. You can be the one to decide. Why do you prefer Hardik more than KL Rahul? Is it because he's an all-rounder? Is it because he's won the IPL? What is it that different that you like more about Hardik in terms of performances, consistency, and everything? What do you feel? Is it that series in Australia which he scored 80, 90, that one series, or where has Hardik won consistently for India? I'm not looking at, actually for me it's more like हार्दिक पांड्या Utility. यूटिलिटी है यार। केएल राहुल को बना दे रहे, विकेट कीपर बना के उसका जगह सीमेंट कर रहे हैं यार, ये हराम का पना है और कुछ नहीं है। क्या देखो है आगे भाई? आगे मेरा काउंटर पार्ट, ही न्यू इट, बिकॉज ये अब ये इनिंग्स रहेंगी, अब अगली इनिंग्स कब उन्हें खेलेगा आई हैव नो आइडिया। अगर उन्हें खेला तो वेरी गुड, आई ऑलवेज से द सेम थिंग, ही हैज द शॉट्स इन हिम, वी सॉ इट टुडे आल्सो, बेहतरीन स्ट्रोक प्ले सब है भाई, लेकिन देखो एट द एंड ऑफ द डे 103 बॉल्स भी लिया उन्हें, एंड हार्दिक पांड्या खड़ा उसके साथ, वरना पिंडा नहीं कर सकता था, खुली बात। हार्दिक का भी स्ट्राइक रेट उतना ही था, लेकिन बट हार्दिक पांड्या खड़ा भी ना, अगर हार्दिक पांड्या आउट हो जाता था फिर ये बोला कि हार्दिक हो गया पांड्या था खड़ा मतलब। भी नहीं। Yeah, but like he still stood till like what 50-60 runs left on the board, and then Akshar Patel KL is a stood in decent the enough. end. Yeah, KL stood in the end, but he also took 103 balls, so he had enough time to finish it. If he didn't finish it, I would have been pissed today. I would have gone ballistic. I would have been Mohsin Khan of India today. I'm गालियां गिन देता था मैच, लेकिन उन्हें फिनिश करा बोल के I'm going to give it to him कि भाई सिचुएशन KL के Rahul हिसाब से strike rate time. 60, KL Rahul 62 strike rate, Hardik Pandya 67 strike rate. There's not much in it, but one Yeah, man but finished it, one man didn't. हाँ भाई, one man went to start hitting, no, one man didn't start going to hitting. Kuldeep Yadav came and hit a boundary, Akshar Patel came and hit 2-3 boundaries. जब जाके थोड़ा pressure soak हुआ, ने टुक खेला तो कहाँ से So pressure you're soak saying हो रहा था? Akshar and Kuldeep could execute the big shots, but Hardik couldn't. I'm not saying that. I'm just saying that in that aspect, he tried to start his engine, but हो गया भाई out. चलो कोई बात नहीं. At least he was trying to do something, and he मतलब stood there for that. पसंद है हार्दिक, ज्यादा पसंद है, उतना ही है, राइट? बात तो मेरे वही को है। हार्दिक, देखो हार्दिक पांड्या इसलिए पसंद, देखो अगर अपन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या has been out of the team ज्यादा because of injuries, right? KL Rahul has been in the team despite not performing, so that is what pissing me off. I agree. I'm not saying I agree completely. Shanaka heart is brick full. Arey Shanaka Yeah, fan yeah. boy, thank you so much for joining us. Please like and subscribe to our channel, man. But respect to Shanaka, he's been outstanding. Aj he got a good delivery. One failure with the bat, but he's had an outstanding tour so far. Captain leading from the front, he batted really well under pressure. जब भी उन्हें आया भाई, उसकी सेंचुरी भी है, and even in the T20 उन्हें मैच जिताया. First trying to smile and distracting me means there's something there in the comments, but so let's go into the next comment. Hardik and Rahul की partnership was good. He contributed and it's a team game. सबको कुछ ना कुछ करना है. आपका रोहित तो 200 नहीं मारा, so दूसरों नहीं मारा. Pandya played according to situation, but Rohit already has 80, a fluent one in the last game. You know, Rohit Sharma, he's scoring his runs. And the way Rohit Sharma started, he was again looking in decent form, but yeah, I mean, he didn't do much. And भाई देखो, मेरा ये नहीं है कि भाई मेरे को केएल राहुल से कोई खुन्नस है या चिराग भाई को कोई खुन्नस है, बट इसको खुन्नस है तो है, जैसा हार्दिक पांड्या से खुन्नस है. कई को है, खुन्नस कई को है, वाजिबी खुन्नस है, ऐसा नहीं कि बेखौफी के खुन्नस है कि भाई बस नहीं पसंद, उसकी शक्ल नहीं पसंद, ऐसा बोल रहा हूँ मैं. आई एम जस्ट सेइंग कि भाई दिस गाय हैज बीन गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, given his talent, given his potential, given the situations. At least एक सिचुएशन में नहीं करा,
आज आप करें, मैं मान रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग मैं नहीं मान रहा हूँ, आई एम 100% विद केएल राहुल टुडे दैट ही डिड सोक अप द प्रेशर, ही टुक हिज टाइम ऑन द पिच, मोर देन एनफ टाइम। भाई 100 बॉल मजाक नहीं है खड़ने को, मैं सब मानता हूँ। You know, that was the same situation Babar Azam was in yesterday. Babar Azam didn't finish. This guy finished. That's the only thing. Now for me, this guy could have done this consistently. I would have been KL Rahul number one fanboy. मेरा अकाउंट में शनका फैनबॉय की जगह केएल फैनबॉय अभी टाइप करता था। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई अगली इनिंग्स अगर आई, एक स्ट्रिंग ऑफ गुड इनिंग्स आई, तो आई विल बी वेरी हैप्पी, बट इफ नॉट देन अगेन इट्स But क्या है if वो he does get a कहावत। string of good innings, if he gets a string of good innings, would you still be confident? Like Chirag Bhai is questioning his big match mentality, big tournament mentality. Would you still be, if he's, for example, now he's going through a poor patch definitely. Last 6-7 months तो evident है सबके लिए. Injuries भी हुए, उन्हें my वापस आए, उन्हें स्मूथ इन दिख रहा है. मगर अभी उन्हें आके अगर फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट सीरीज जीती है, उन्हें उठा के 2-3 सेंचुरी मार दिया 3-4 गेम में, तो फिर आप बैक करेंगे उसको, या आपको ये बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि भाई इन्हें वर्ल्ड कप में नहीं परफॉर्म करेगा? मेरे को ये सब नहीं है, मेरे को ऑपोजिशन अब देखूंगा मैं, ऑपोजिशन के हिसाब से किधर खड़े उतरा। अगर बॉर्डर गवास्कर में कुछ उखाड़ा उन्हें, अगर लेट्स से कोई और बड़ी ऑपोजिशन साउथ अफ्रीका में जाके कुछ कर रहा या इंग्लैंड में जाके कुछ कर रहा, फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई इसका कॉन्फिडेंस आया। अब निल्ले पिल्ले चिल्लों को मार लिए तो नहीं होगा फिर, नहीं, जब मगर जाके उन्हें बंगला पहले भी मार चुका है बड़े टीम्स को, मगर फिर जाके वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम हुआ उसको। अब मैं, जैसा आप बोल रहे, इंग्लैंड में भी उसकी सेंचुरीज है, उन्हें न्यूजीलैंड में बट अब देखो सेंचुरीज है। लास्ट ईयर अगर अपन उठा के देखे तो इंजरी भी ज्यादा थे, फिर उन जा रहे आ रहे, हाँ, आई वांट हिम टू बी कंसिस्टेंटली इवन इन द टीम। इट्स नॉट लाइक बट यू गो ऑन अ हॉलिडे, यू हिट 100 एंड यू स्टार्ट प्लेइंग अ कंसिस्टेंट रन ऑफ टूर्नामेंट्स। okay, but what Chirag Bhai's point I think is, maybe I'm mistaking it, but what I'm saying that even then he was in excellent form, he was hitting big teams, but then in ICC tournament he didn't perform on वहां that level. अगर आप नहीं, but अगर if he's displaying a confidence portrayal, then again you have to give it to him. But now the most interesting thing for me and Chirag bhai would be कि भाई अगर ईशान किशन को equal opportunity मिलेंगी, then I want to see the comparison. Then I would take Ishan Kishan. If Ishan Kishan is performing and outperforming KL Rahul, then I want to see Ishan Kishan in the 50 over World Cup, not KL Rahul, because I've seen KL Rahul in ICC tournaments. I've seen him in IPL, big games in IPL. He's not been there. At least Ishan Kishan will be a new breath of air, and अगर है तो उसको भी कल गिनेंगे, but at least it'll be his first ever ICC tournament. You know what I mean? Yeah. Hardik is much better than KL. बड़े मैच में चलता भी है. India vs Pakistan Champions Trophy final. Also in Asia Cup, that one game I remember. Champions Trophy final तो मैच खत्म हो गया था. Like उसमें उन्हें जितना भी मारो बहुत मुश्किल रहता था चेस जब तक. Also no Yeah. replacement for fast bowling all-rounder KL की सही है. I don't have an argument for that. Kuldeep playing today provided extra batting. Otherwise, when extra wicket fell, it could have been tense finish. But the thing is that extra batting was shown the way Kuldeep batted. But if you see on paper, you wouldn't think. आप assume करते आए हाय अब tail आ गया मुश्किल है. You have to be very careful. But the way Kuldeep batted gave us the confidence. We didn't know that. Like of course in the test match he batted really well. But ये सब अभी recently हो रहा. So that's what I'm saying. You have to give these bowlers a chance. Also, Faz actually mentioned this more than me. He said कि भाई आप खिलाओ लंबी टेल को and expect them to give them responsibility with the bat. Tell them to practice. मेरे को कुलदीप यादव की बैटिंग में कभी ऐसा डर नहीं था, बिकॉज मैं आईपीएल में देख के हूँ, ही हिट अ फ्यू 20s इन द आईपीएल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ही कम एंड स्वंग द बैट। तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि इन्हें नहीं मार सकता है। आई एम प्रीटी श्योर द वे ही इज गोइंग, आई एम नॉट, द डे इज नॉट फॉर दैट वी सी अ 50 फ्रॉम दिस गाय। एंड भाई अब अगर कोई मेरे को बोले चहल, अगर चहल अब अगले मैच में आ गया, भाई मैं जा रहा हूँ वहां, जहां भी मैच है मैं जा रहा हूँ। भाई क्या बॉलिंग थी भाई कुलदीप यादव की आज, he broke everyone today, he shocked। अब तो कोई मतलब बनता भी नहीं भाई, इसको पूरे फॉर्मेट्स में वापस लाओ। चहल इज रिप्लेस, चहल इज ओवर, गेम ओवर, जैसा अंडरटेकर बरिया लाइफ कर दिया वैसा कर दिया ना चहल को। Okay, for KL, Rahul, Rock, Faiz Bhai, shock. Taking 100 ball is like waiting for a good ball to get out and leave your team drowning. I mean, if he got out, then there'll be a lot of criticism. But Faiz KL, before the last two series, he was consistent. His average was 50 plus in ODI. I think we saw his failures in T20. But you don't go away and then come back, no? In the middle also he took a holiday and he came back. भाई मेरे को भी दो, मैं पूरा 2 महीने काम करता हूँ, फिर मेरे को 4 महीने की छुट्टी दो, फिर मैं रिफ्रेश होके आके फिर मैं खेलता हूँ। भाई कंसिस्टेंट रन भी होना ना भाई, कितना प्रेशर बाकी के प्लेयरों पे, बेचारे धवन अवन को तो एक टूर्नामेंट पे बिरते पे आप सेलेक्ट कर रहे, इनू चिच्चा एक सेंचुरी पे मार के फिर छुट्टी मार के आते फिर आ जाते। तो भाई वो सिचुएशन है मेरा, सेम विद रोहित शर्मा, बट रोहित शर्मा इंजरी, आई डोंट नो व्हाट दिस गाय हैज।
No. Why are so many old age people at Eastern Cape, bro? Everyone are above 28 plus, and home ground is so small. Looks like Fresh can hit six with. Man, I don't understand why we couldn't get 2, 3 players from the Mumbai franchise. Why the Sunrisers have this kind of team? Okay, but and also by Wayne Pandal, no ball में 29 मार दिया. दीदी का पैडल नहीं उठता यार वो. किसका? और दीदी का पैडल. 77 or 47 field shot उन लोग 190 बनाए when you had them 100 for 5. And Wayne Parnell and James Neesham both batting really well in the end along with Phil Salt. यहाँ पे Irby out हो गया and Smuts is batting with Jordan Cox. Aiden Markham picked up a couple of wickets. He bowled well, Fez. But yeah, man, I agree. Like थोड़ा सा मगर Markham का क्या age है? 27, 28 हो गया शायद because couple of years ago he was 26, I think. So yeah, he's 28. He's 28. और इन्हें कितने का है मिस्टर मार्को यानसन? मार्को भी 20 कुछ है. मगर हाँ बार्टमैन को बहुत बुरा मारे और एंड में लास्ट ओवर में I was depressed, man. Now this is a big score to chase. I don't know if it'll happen. This team is good, man. They have Rosso, Salt and all these guys, the Delhi team. Markham, sorry, Jansen is 22. Jansen is 22, yeah. But yeah, the average age is older. Why is that the case? I don't have an answer for that. I don't know. Like, I mean, अब वैसा तो नहीं बोल सकते एज के हिसाब से क्या है, but जो जेम्स नीशम का भी शॉकिंग था 37 में, he's been in a very bad place right now. In the T20 World Cup, we were having expectation. तुम एक बार लाइनअप देखो सनराइजर्स का, एक बार तुम रात में देखो और फिर बोलो कि why wasn't there equal distribution? Maybe they didn't have enough purse compared to Mumbai. I don't know what it is, bro, but unbalanced team दिख रही वो. How was Donovan Ferreira yesterday taking teams from 27 to 4 in 6 overs, 190 for 6 in 20 overs? He was outstanding, man. कल का गेम कुछ और ही था यार. कल का गेम में कितने रिव्यूज हुए भाई. पहले तो वो देखो आप, टीवी एम्पायर टू डायरेक्टर कितनी बार यार. एक ओवर आई थिंक इट प्रोलॉन्ग द मैच टाइम. Me and Mustafa were supposedly going to come, but then Mustafa said भाई क्या है, इन्हें मैचेस नहीं खत्म कर रहा, आगे बढ़ते जा रहा. And yeah, I mean it was phenomenal. बैटिंग फ्रॉम फेरेरा, क्या शॉट्स था. he just really stepped up. एक स्वीप मारा था लाइक स्क्वायर लेग के ऊपर, वो जबरदस्त दिखा मेरे को. रिवर्स स्वीप उसको मारा था अखिला धनंजय को, आई थिंक. वो दो शॉट मेरे को बहुत अच्छे दिखे. एंड मैन दिस इज इट्स ग्रेट टू सी बिकॉज इट जस्ट शोज द पोटेंशियल साउथ अफ्रीका हैव. इमेजिन फेरेरा, ब्रेविस एंड स्टब्स. That's a crazy middle order, man. And yeah, he looked really good. थोड़ा सा अलग दिखा मेरे को. He's not like, you know, probably your classy batsman timing and all that, but I love the way he played his shots and he was aggressive and counter-attacking. आप देखो 27 for 4 थे along with his captain Faf. They built a partnership. Even when Faf got out, he continued to take the attack, and he got them to the match-winning score, man. Without his contribution, they would have lost the game easily, because if you see how Quinton de Kock started and the Super Giants, how they started, they would have chased down 160, 170 like this. But because there was 190, they also choked in the end and lost by 15, 16 runs. Yeah, and somewhere down the track, they just lost, I think, track of time and the number of balls that they had. I think they were not looking at the score or something, and they were not looking at the time left. Because jab tak Quinton tha and Kyle Myers tha, they were getting consistent boundaries and sixes, ye wo the, but uske baad thande ho gaye beech mein ekdam se. So I don't know how they lost that. They should have ideally won, in my opinion. But yeah, credit to, you know, to win. दिनेश कार्तिक ने अश्विन को वर्ल्ड कप में इंक्लूड करने के लॉबी शुरू कर दिया है क्रिक बस पर. नो करने की लॉबी शुरू कर दिया है क्रिक बस पर. दिनेश कार्तिक सिंह मतलब अश्विन को लेके आओ. So basically he's like Gary Neville and Paul Scholes of India, huh? उनला भी वही प्रमोट कर लेते रहते, फिर ये आ जाता अश्विन. मैन आई डोंट नो, अश्विन का देखना पड़ेगा. ऑस्ट्रेलिया से देखना पड़ेगा भाई. वाइड बॉल नको, रेड बॉल नहीं कैसा देखना बोल रहा हूँ मैं लेके आओ नको बोलो भाई. मैं कल भी बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में आके परफॉर्म कर देता भाई. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्म करा तो फिर शुरू होते हो बात. अश्विन ठीक है भाई, रेड बॉल में रखो उसको, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, मगर वाइड बॉल में बस हो गया. आपके पास है ऑलरेडी फिंगर स्पिनर्स. आप दो फिंगर स्पिनर खिलाएंगे. अगर दो खिलाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम होता है लास्ट. हाँ, तो even if you want to play two finger spinners, वो odd match में रहेगा, because every match there should be one leg spinner or one finger spinner. If you get Ashwin in, फिर कुलदीप या चाल को बैठना पड़ता, just because he knows how to bat. Bro, don't give me that, man. Now Kuldeep can also contribute with the bat. देखना जरूरत ही नहीं है, I don't think, because अब 2017 में क्यों हारे थे चैंपियंस ट्रॉफी? मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं आ रहे थे, राइट? मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं आ रहे थे, तो फिर विराट कोहली क्या करा? ही ड्रॉप्ड अश्विन एंड जडेजा एंड ही गॉट इन कुलदीप एंड चहल.
Now we're not saying to drop both Jadeja and Ashwin. You can play one finger spinner and play the other leg spinner. अक्षर Balance भी it. तो है भाई, अक्षर भी तो है, फिर अक्षर भी आएगा. Yeah, so Aksar ya Jadeja is one of my finger spinners, and the other one you take Kuldeep or Chahal. But the only thing is, like, based on what Rohit Sharma said in the conference कि भाई हम लोग क्रॉस क्रॉस क्या बोलते हैं, टेस्ट मैच ओडीआई के, हाँ, क्रिस क्रॉस नहीं करने वाले फॉर्मेट्स को हम सीधा जिसका जो खेल रहा हो देखेंगे. तो अगर उन्हें रेड बॉल में परफॉर्म करा, उन्हें व्हाइट बॉल में आया, तो फिर सवाल ना उठना. फिर वो ऑलरेडी सवाल उठना चाहिए बिकॉज ईशान किशन फिर कौन सी बेसिस पे ड्रॉप हुआ. वो तो देखो भाई, शुभमन गिल परफॉर्म कंसिस्टेंटली करा एंड देन केएल राहुल को घुसाने के लिए फिर विकेट कीपर बना दिए. दैट इज ऑल. अब अगले मैच, अब आई हैव अ फीलिंग नेक्स्ट मैच सूर्य कुमार विल प्ले बिकॉज़ 2-0 हो गया. अब सूर्य कुमार को ट्राई करेंगे 50 ओवर्स में, इज व्हाट आई फील. आई थिंक श्रेयस को बिठा सकते. श्रेयस खेल रहा था अच्छा, नो डाउट, बट ही गॉट आउट लाइक टू अ वेरी गुड बॉल. But again, I feel like they can sacrifice Shreyas in one ODI. It's not going to be. Sunrisers have Stubbs. He is 21 years old, and he was the most expensive buy, if I'm not mistaken, in the auction. They also have Jordan Harman, a 20-year-old explosive opener. Not sure why he's not playing. I mean, that's a good shout. I haven't seen Harman, so I'm looking forward to seeing him. But Stubbs, I know, man, he's outstanding. Even in the English summer, the way he batted against England, incredible. One innings, I think he hit like 70 of 30 deliveries. Outstanding innings. Kuldeep, Chahal, Sundar, Jaddu, and Aksar. We don't need Ashwin, please. Shahbaz Ahmed, Lelo, he's much better. Yeah, you have Washington Sundar also, man. Like, I forgot. वो भी है. Ashwin की क्या जरूरत है? If Ashwin could have bowled better in T20 World Cup, we might not need him. Please, Shahbaz Ahmed ले लो यार. ऋतुराज को मौका मिलेगा नेक्स्ट. नहीं बोल सकते यार, ये बहुत अजीब फॉर्म है. मे बी केएल तो नहीं ड्रॉप होगा, तो ईशान नहीं आएगा. शुभमन को मौका दे सकते हैं बिकॉज़ शुभमन अच्छे शॉट्स खेला. तो रोहित एंड शुभमन विल स्टिल स्टे देयर. कोहली को तो हटा ही नहीं सकते. मेरा एक ही चेंज दिख रहा मेरे को, या तो दे माइट ट्राई एंड रेस्ट अ फास्ट बॉलर इन सिराज एंड उमरान, जस्ट एंड गेट अर्शदीप, and they'll go with Surya Kumar instead of Shreyas. That's the only changes that I can see. They should rest Umran Malik for sure, man. You can't run him to the ground. You have to give him. You have to give him breaks. मेरे को डर होता है यार, ऐसा इतना 145 पे आके डाल के फिर यूं शोल्डर पॉप का. भाई नको भाई, कहीं को गोल्डन आर्म को कहीं को हार्म कर रहे. भाई he's not like us, man. He's well built. Like us? Sorry, like me. He's well built. And plus, like, bro, he's like. Yeah, he's agile. Of course, he's agile, man. He's definitely. But I'm just saying, man, वो speed पे लाके फिर वही intensity या वही हाथ को नको भाई. But he definitely needs a break. उसको नहीं So that's how I'm looking at it. Maybe we see someone resting in an Umran or Siraj also, man. Siraj should also take some rest. Arshdeep को ला लो भाई, 50 overs under his wings मिल जाते उसको. We'll have more idea of how this guy can perform in a 10-over match, like 50-over match in under 10 overs. And then we get Shreyas को भी थोड़ा बिठा दो भाई on 20-20s मारे. Though he was looking very dangerous and destructive, but Sky can be doing that as well and faster. Were you impressed with the Sri Lanka's debutant? Oh my God, that guy looked more mature than half the Sri Lankan opening. They look like they were opening. Yeah, Novindu, amma kya lamba hai उन्हें, बेहतरीन. And the way, like, even Sunil Gavaskar and Asha Bhogle were in full praises for him, saying कि भाई देखो ऐसा खेलते हैं debut, no need of getting stressed. You rise through the ranks. It's your opportunity, and he grabbed it by both his hands. He soaked up the pressure. Unfortunate run out हुआ था ना, if I'm not wrong. Shubman Gill, there was no run in that. पागलों के साथ run out कर दिया उसको. And yeah, it's just unfortunate, but very well played. Good shot selections. He knows how to find the gaps. Height advantage पे फोड़ दिया सबको आज. Very well played actually. तो बोले उसको run out कर दिए, मगर maybe it's a bit of his fault as well. Maybe, I mean, just, but उन्हें debutant है यार, जो भी साथ में उन्हें mature था ना यार, उसको तो भी वो करना था. Yeah, like he was pretty impressive. But again, I think the top three will be kicking themselves because they got starts and they didn't convert them. Of course, you want your middle order also, but we mentioned the top 3-4 need to step up for Sri Lanka because so many times the middle order have been rescuing them. And although they got off to a very good start, they could not take it a step further. And after that, Kuldeep just ran through the middle order. So again, I would say that for me, if you get out early, okay, fine. Like the first one day, okay, fine. It's done. But here, when you get starts, when you consume 30 deliveries, 40 deliveries, then you need to, try to
take it to the next step and convert those starts into big scores. If धनंजय द सिल्वा हमारा उसका तो पैड को लग के विकेट पे लग गया, अनफॉर्चुनेट था वो. अगर उन्हें एक 20 रन मारता था और अगर एक और चरित श्रीलंका और 15 रन मारता था, 30 रन आते तो बहुत मुश्किल हो जाता था मैच. बेस्ड ऑन व्हाट आई एम सेइंग, बेस्ड ऑन मगर सेकंड इनिंग्स के बारे में बोल रहे, अगर वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन लाइक समटाइम्स यू डू मिडवे, वी वुडंट बी सेइंग दिस बिकॉज़ वी वुडंट नो हाउ द पिच इज प्लेइंग, विल से कि इन लोग वो play. मगर अगर मैं खाली देखा जो सेट थे बैट्समैन, उन लोग को ये पिच पे कन्वर्ट करना चाहिए. जैसा अब लाइक केएल जब सेट हो गया, आउट नहीं हुआ उन्हें, इट वाज स्टिल डिफिकल्ट फॉर हिम टू स्कोर. ही वाजंट नॉट he was still not able to score at a healthy rate. Yeah, because also due थोड़ा bounce out था and like बहुत से चीजें थे उसमें. But I felt that once you get a start like that, you need to take it to the next level. Didi is in the stands. I saw her, man. I saw her. She's there in Port Elizabeth, man. South Africa is beautiful. Ibrahim bhai, like we want to come and watch cricket over there. So hopefully we'll come and watch a game with you. You enjoy the game. South Africa is outstanding, and this is the T20 World Cup Women's Under-19 and Senior is there, man. It's going to be beautiful. दीदी है बोल के 34-2 है पिंडा. दीदी निकले वॉइस मारते हैं. Well, at least you guys were off to a winning start. They won't give chances to anyone. If they selected Gill for this series, it showed they back him to be opener for the World Cup. Ishan comes before Rituraj. Yeah, but like that. Shubman Gill hasn't done much wrong also. Based on it, that's what he's saying. Based on the track record, उसको consistently अगर देख रहे तो शुभमन गिल has had a good runs of good consistent run. तो इसलिए हम ना पिक कर रहे हैं. And then केएल राहुल को जिस तरीके से खिलाए ना, वो बहुत कमीनापना है. देखो, अगर तुम्हारे को शुभमन गिल भाई आ जाओ तुम भी. ईशान किशन को ओपन करा के शुभमन गिल को मिडिल ऑर्डर में करा सकते थे. या देखो, कोहली के बाद दो एंकर की प्रॉब्लम है. वर्ल्ड कप में पृथ्वी शॉ जब कैप्टन था, शुभमन गिल कौन से पोजीशन पे बैटिंग करा? थर्ड राइट. Yeah, one down खेला, right? One down खेला. That's where he got all his runs. He scored 100 in the semi-final against Pakistan, if I'm not mistaken. जो न्यूजीलैंड में होता है World Cup. Yeah, so he can play in the middle order. The middle order. He started his career in the middle order. So you can definitely try him out there. Why not? And based on what India starts have been in the recent thing, it's not bad that we have two anchors in the middle. It's okay, man. We've not had like out हो जा रहे थे opener. ईशान भी out हो जाता, इन्हें भी कोई बात नहीं भाई. शुभमन एक 4 बॉल के बाद आ जाएगा, मसला क्या है? या कोहली आ जाएगा 4 बॉल के बाद. But Ishan Kishan also didn't do anything. KL Rahul has been having such a bad strings of matches and आप फिर भी उसको बैक कर रहे. क्यों उनको विकेट कीपर बना दिया भाई? जो विकेट कीपर बनाया है उन्हें क्या बेवकूफ है? इतने सालों से विकेट कीपिंग कर रहा, खाली क्या बोलते हो? केएल राहुल ना बैटिंग का था ना विकेट कीपिंग का था. क्या बेसिस पे सिलेक्ट हुआ? क्या है? आज फिर भी कमेंडेबल था भाई. I'm going to go back and say that he was brilliant today. सिचुएशन के साथ. लहिरू इन T20 और वन ओडीआई का क्यों रस दिया लाने के लिए? आई डोंट नो उसको क्यों इतना टाइम लगा. शायद कोई इंजरी हो सकती है या कुछ तो हो सकता है, मगर टाइम लगाया. उन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग करा आज भी. And he actually was very well against Kohli, I think, right? He always like something between him and Kohli that he always manages to get goal. He's a very good bowling. 145 मारता भाई, 146 मार लेता उन्हें भी. And he has he's very good bowler for Sri Lanka. उन्हें चमीरा नहीं है. नहीं, चमीरा भी इंजरी प्रोन रहा है. क्या जबरदस्त एक्सप्रेस पेस है उसका, तो उन्हें भी जबरदस्त बॉलर है. सेम टीम को खिलाओ बिकॉज बाद में आईपीएल एंड टेस्ट चैंपियनशिप आएगा. सो वोंट हैव प्लेयर्स इन ओडीआई टच द स्क्वाड टू प्ले मोर मैचेस. चॉप एंड चेंज नहीं करना. I agree there, but I'm saying someone like Umran Malik needs rest because you can't. Quick bowlers, I think you have to rest. You see that all over the world, whether it's Naseem Shah, whether it's Shaheen Afridi, it could be anybody. I feel that like fast bowlers need to be rotated here and there just because there's so many games involved. But I agree, if you want to play a combination, you back them, you can play and make. I'm saying make 1 or 2 changes. I'm not saying to change the whole team. Yeah, and based on the injury, the list of injuries that we have ideally in the near. It's good that we rotate a few because कौन कब कौन से टच में है नहीं मालूम ना. सबको टच में रखना पड़ता है. अगर 11 के 11 टच में है, बाकी के एग्जैक्टली. अब जैसा अगर उमरान मलिक पूरा खेल लिया, फिर जस्ट एंड फाइनल से पहले या लाइक एक बड़े टूर्नामेंट से पहले इंजर हो गया, फिर अर्शदीप खुदा ना खास्ता खेला ही नहीं. राइट, यू नीड टू लाइक यू सेड पूरे 15-20 शुड बी इन टच, नॉट जस्ट द 11. 100%. You need to make slight changes. So, yes, I saw her.
लग रहा है ईस्टर्न केप हारेगा 100 रन से। ईस्टर्न केप कौन सा सिटी है फैज बोलो, यू कैन सर्च इट, नो प्रॉब्लम। I don't know, सर्च man. नहीं, यू Cape, सर्च इट, सर्च इट, आई वांट यू टू प्रोनाउंस द नेम, सर्च इट। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो व्हिच सिटी केप इट इज। टाउन इस दिमाग में आ रहा मेरे को, ईस्टर्न केप बोल तो क्या ईस्टर्न है? कौन सी सिटी का है टीम? Ibrahim, can you अच्छा, write down the spelling? Just pronounce it for me. That's what I'm saying. गैब्रा, गैब्रा। कल है ना, ये सिटी का नाम उससे बुलवा रहे थे, और पौमिया बंगवा से, आई थिंक someone caller was Obviously, saying it on बैलेंस टाइम से बुला रहे थे कल। Darren Sammy से, someone Gegbra. No, not left hand, no left-hander in top six. This will cost us. The World Cup KL saved us today, but we need to do something. Yes, like left-hander. I'm not a big fan of matchups, but a left-hander in the top order always helps. It screws with the bowler's mind as well, because आपका line length adjust करना पड़ता, wides भी आ जाते, extras भी आ जाते. तो उस हिसाब से I think left-hander जरूरी है top order में, and that's where Ishan Kishan or somebody there, like पृथ्वी unfortunately शॉ Rishabh भी है अभी तो। Pant. हाँ, अब तो पृथ्वी शॉ भी आवाज ना कर रहा हूँ से। अच्छा अब मेरे को बोलो, पृथ्वी शॉ तो खेल रहा है रणजी, तो जो भी इश्यूज है साइड में लेके नहीं रख सकते उसको टीम में। पानी की जगह ब्रेक में कुछ और दे दो उसको, मसला नहीं है, खिला सकते हैं। भाई 300 कुछ मारा उन्हें, मजाक नहीं है। 379 मैन, 379 ब्रायन लारा वहाँ सिगरेटा मार ले रहा हूँ बुढ़ापे में, वही ने मेरे 400 तो नहीं तोड़ देना बोल के, दैट गुड हैव हैपेंड। ब्राइलर का 500 भाई है फर्स्ट हाँ, क्लास वो में। तो फर्स्ट क्लास में है, ये राइट, भी फर्स्ट क्लास 501। ही है भाई। या मैं मतलब अब वो याद नहीं रहता ना ब्रायन लारा भाई। There's levels to this game. लीजिए आप कमेंट। I think Latham showed in Pakistan versus New Zealand what a good keeper can do. KL Rahul will drop casual and miss terms, but excuse will be that he is a part-time keeper. Yeah, 100%. अच्छा छुप रहा उन्हें, and but देखो भाई, credit to him, he has kept well in this tournament so far. I mean I है have my उसका, doubts. but Didn't he miss the stumping in the first one day? in the test match टेस्ट मैच नहीं, में कौन सा? sorry, पहला वनडे में। हाँ वनडे में नहीं, वनडे में नहीं यार, वो मैं बोलता रुको, वनडे में नहीं यार, उसका चिराग भाई याद दिलाओ यार मेरे को एकदम, आई नो व्हाट थिंग, जब उसको वो पड़ी यार, गाली पड़ी थी सुंदर को जब, वो तो बांग्लादेश, वो तो कैच ड्रॉप कर हाँ रहा था ना, सिंपल। नहीं, फिर आई फॉरगॉट, खैर I'm not recollecting, but No, yeah, but I agree चिराग with भाई Chirag. बोल। If I see, like I talk about the wicket keeper, it's very important to have a full-time wicket keeper. If suppose you're playing against Pakistan, Babar is on like 10 and you drop him and then he goes and scores 100. Like similarly, if someone like Butler is batting, you drop him on 3 or 4. फिर आप पूरा match हाथ से चला जाता. I agree Yeah, with it. You need to have a proper full-time keeper who can, and you have the likes of Ishan Kishan, Sanju Samson. Sanju Samson again, I don't know whether you consider him part-time or full-time, but I think he keeps more than KL Rahul. no, If he's I'm full not, time man, Sanju is full time yeah, because Royals में भी करता है in उन्हें। Ranji Trophy also he keeps. So I think Yeah, he's he's a full time keeper, he's not a KL Rahul is just a, when have you seen KL Rahul keep before this in the Punjab IPL? Yeah, when, how long ago? 2 साल पहले। 2 साल पहले, राइट, 2 साल के बाद कहीं को नींद में से उठ के उनको विकेट कीपिंग के पीछे बू याद आ रही विकेटों की, कहीं को याद आ रही, ईशान किशन ये सब मर गए क्या, है ना भाई, फिर कहीं को उसको उठा के नींद में से, बिकॉज ये पूरा स्कैम है भाई, गोलमाल है तो भाई मतलब सब। मेरे को समझ में नहीं आया, तो लाइक just to fit him in as a keeper, but I don't get it. Like maybe they just Why? want to. Because see, if he's a keeper and Ishan Kishan और संजू सैमसन पुल्ले, संजू तो इंजरी प्रोन है, कहाँ इंजर हो जाएगा, ये इन लोग की आंसर रहेंगे, संजू तो इंजर हो सकता, संजू के लिए बैकअप रख रहे, अगर ईशान किशन के अलावा और कौन है भाई कीपर डिपार्टमेंट में, ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत बेचारा, तो फिर यू आप नो। उसको रख सकते हैं स्क्वाड में, मगर 11 में किसी और को ट्राई करो भाई, ये भी है फैस। अब मेरे को बोलो, अगर ईशान किशन आया खेला नेक्स्ट वनडे सीरीज, अब केएल राहुल मोस्ट लाइकली नहीं रहेंगे, जो हम सुन रहे हैं, वी डोंट नो। अगर नहीं खेल रहा और ईशान किशन का एवरेज 10 रहता है या 5 रहता है, या मतलब he doesn't score a 50 in that thing, what will happen? Sanju Samson, like you said, is injury prone. What will happen? They'll go back to KL Rahul. So this is Exactly, that is what I'm saying. After 2 years, why do you think they woke him up from saying that this is your only opportunity? Because based on maybe only it's batting, because of the Rishabh Pant situation. They need extra keepers. They उसको तैयार रख रहे हैं, because maybe they don't believe. एक्सीडेंट से पहले कर रहे उसको कीपिंग, एक्सीडेंट से पहले कर रहा हूँ कीपिंग। हाँ वो सही है, बट मे बी और उसको दे रहे चांसेस, वो तो सही एक्सीडेंट से पहले कर रहा हूँ, बट मे बी इसलिए कर रहे बिकॉज देन यू डिपेंड ऑन ईशान किशन एंड संजू सैमसन, एंड Based on only batting, KL Rahul cannot get into this team. We know that, and that is the only reason I feel that they have made him into a keeper so that Ishan and Sanju के basis में इसकी selection होना, जहाँ पे उसका cement हो जाता position. That is my feeling. I don't know. And नहीं, I don't hate KL Rahul, Ashish bhai. I'm being very honest. I respect the batsman. I like his stroke play.
but it is just that very conveniently he has been bought into this team. ऋषभ का तो obviously बहाना रहेगा, अब इन्हें अच्छा नहीं खेला एक्सटेंड बिठाएंगे, ईशान को लाएंगे, ईशान अगर अच्छा भी खेला ना, इसको ये जो इनिंग्स था इसके बिरते पे वापस ला लेंगे, अरे इन्हें प्रेशर सिचुएशन में सोक करके टेंशन 100 वाला खेल के उन्हें 41 जीता भी बनाया, 50 समथिंग और 60. I don't know, hate him, but केएल राहुल की विकेट कीपिंग वर्ल्ड कप बिग मैच में मरवा देगी, हो सकता because he's too stressed always for some reason. Maybe शादी के बाद चेंज होते लोग, I don't know. न्यूजीलैंड स्क्वाड आ गया T20 सीरीज के लिए। भाई कहाँ है स्क्वाड? बस कितने थे पाजी? Gberha is the spelling before known as Port Elizabeth. Not sure why this. Oh, it was Port Elizabeth. I know Port Elizabeth, bro. Like there's a lot of games which happen there. So now New Zealand की चाहे, if I'm not wrong, because उन्होंने announce कर दिए थे public में, not New India. Zealand का squad आ गया, हाँ. In second ODI against Bangladesh, we dropped Mehdi when they were 9 down, and we know what happened after that. Yes, I clearly remember that game. That was that catch जो ऐसा drop करा, वो गाली की बात हुई थी फैज वो वाला. I think he was even in the keeping he struggled with stumping. In the keeping also he struggled with the stumping. आपको नहीं, उन्हें कीपिंग ही कर रहा था वो गेम में, याद है? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, exactly. हाँ, yeah. आपको आज इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी लगी? इंडिया की परफॉर्मेंस आपको? समीर जैदी पे समीर भाई ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस थोड़ी mixed of everything. Bowling was good, bowling was very good. They finally cleared up the tail, and Siraj आके they cleared it faster than regularly. मैं फिर भी वो क्या है बच्चे का नाम, उसका नाम भूल जाता हूँ, काफी डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन उसका. Velalega and Karunarathne were looking dangerous, but then Umran Malik, Siraj, these are the bowlers who you expect to clear up the tail, and that's what they did, and I was very happy. Batting का अगर अपन देख रहे हैं भाई, too many wickets fell up front, and it was a difficult wicket to bat on. Youth had lots of factors, but अपने batsman की जो quality है, were well enough and well equipped to have easily won this match. So I think थोड़ा बहुत disappointed ही हूँ, but yeah, we at least are 2-0 right now, तो उसकी खुशी है. Oh, Faiz, you can take the next comment. आप कहाँ से? इंडिया. मैं इंडिया से हूँ, मुस्ताफा पाकिस्तान से. नहीं, हम लोग दोनों इंडिया से हैं. हैदराबाद इंडिया. But we can pull up Pakistani also. That's the beauty of both countries. The cultures are the same, man. Definitely. He doesn't know whether from India or Pakistan. That means we could be from either one. Don't be surprised. But yeah, originally 100%. From India, living in the Middle East. Craig Buzz. The teams I think मैं बताता हूँ फैज भाई क्या सीन है. अभी इसको विकेट कीपर बोल के खिला देंगे, फिर ये 2-3 मैच जिता देगा, फिर किशन को गिल की जगह लगाएंगे लेफ्ट हैंडर बोल के, और राहुल मैच विनर बोल के इन 11. मैं यही तो बोल रहा हूँ जब से कि भाई इसको खैर देखो, लेट्स वेट आउट, लेट्स सी. बहुत साल है अभी, बहुत महीने, अभी 10 महीने, 8-9 महीने हैं. लेट्स सी, अब कुछ नहीं कर सकते. चिराग भाई जितना भी अपन सर मार लेंगे उससे कुछ होगा नहीं. लेट्स जस्ट वॉच द मैचेस एंड सी इफ केएल राहुल इज अप फॉर द टेस्ट एज द विकेट कीपर. खाली वो अब देखना. अभी आई थिंक ही वांट कीप इन टेस्ट मैचेस. आई थिंक who is going to keep in test matches? Either KS Bharat, I think has, because if he bowls and then वो bounce कैसा पकड़ेगा देखूंगा, फिर मैं उसके हिसाब से फिर उसकी कीपिंग की टेस्ट भी हो जाएंगी वहां पे. उसमें I don't think he should keep. Sri Lankan wicketkeeper for no reason be like, how's that? ले लो review. Yeah, Kusal Mendes is very nervy बेचारा, उन्हें कुछ भी सुनते कि डाल देता रिव्यू में. The problem is with BCCI treating KL as senior player similar to Rohit and Kohli bracket. So on that basis, he can take a rest or play whenever he wants. KL doesn't have World Cup trophy, so why this behavior? I don't know. I think it's just he has been in the team for quite a while now, and I think he has a contract as well, like you mentioned. But yeah, that's unfair on other people as well. And according to the latest meeting and everything, this rest is not going to happen anymore. Khalas, T20. Now it's all about yo-yo and beep and sugar, glucose, BP सब टेस्ट होने वाले हैं भाई. अब वो कितना होने वाला है वो क्लीन शीट का तो एनसीए का मालूम ना आपने को टेंशन कैसे रहती है. But I don't know how it's going to be, if it's actually going to happen or not. But let's see.
अय्यर पे प्रेशर आ रहा है क्या? क्या सूर्या की वजह की बैटिंग फ्लॉप हो रहा है ना? आई डोंट थिंक प्रेशर आ रहा है, बिकॉज सूर्या का तो प्रेशर पहले से है। और अब अगर आप देखें, बांग्लादेश सीरीज में दोनों खेल चुके थे वनडे सीरीज में, और श्रेयस की बेटर परफॉर्मेंसेस थे और दोनों जब साथ में खेल रहे थे, तो आई डोंट थिंक प्रेशर है। अब अगर आप सूर्या को देखो तो वो तो T20 में तो आउटस्टैंडिंग, क्या मेरे हिसाब से तो वो खेलना चाहिए वनडेज में, लेकिन आई मैं जस्ट फील दैट ही विल, श्रेयस अय्यर still has to improve his game. There will be certain times where he won't be able to perform, and also let's see what happens. The pitch also I don't think was the greatest, so let's see what happens. comparing both the players right now, I think Iyer has played more ODIs because अगर आप T20 की immediately बात भी देखो, Iyer खेला था. I don't think Sky played that against New Zealand Sky, where in the one days? after T20 World Cup. Iyer Yeah, played. yeah, Remember, he played. yeah, He played yeah. like one match, not all of the matches. I think. Who, Surya Kumar played and Ayer played, yeah, in the one So yeah, days. Iyer was better, and Iyer has a lot of more experience in one days when you compare it to a Surya Kumar. But Surya Kumar deserved one chance at least because last time he 24 पे out हो गया, ये time भी 28 पे out हो गया. Like he's showing intent, he's showing aggressive intent. I just hope he's not trying to, because of the way Sky is playing, he's also turning his game into an aggressive intent. It's good, but he's getting out as well. That's what I feel. सिवाय केएल बैकअप कीपर, पंत के बाद ईशान हु स्कोर 200, देन सैमसन जो 60 का एवरेज इन ओडीआईस. केएल का स्कैम है, पॉलिटिक्स बैक्ड अप बाय दिस परफॉर्मेंस. फुल टाइम कीपर को रेडी करो अगर करना है. ये फैज तो यही बोल रहा जब से, उन्हें 2-3 एपिसोड से यही बोल रहा कि उसको क्यों बना रहे स्कैम ही, 6 विकेट कीपर क्यों बना रहे हैं उसको. अगर मेरे को पूछो तो आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज. आई फील दैट मे बी दे जस्ट वांट टू बैक केएल राहुल. he's our player. We want to back him until the end. He's done good for us before in the past, and we want to continue. I don't think it's fair. But also, I think Ishan Kishan scored a double hundred, and he definitely deserves a chance for sure. But also, there hasn't been too much breaking down. Sanju Samson 60 का एवरेज है ODIs में. सैमसन का हाँ, मगर वही है, उन्हें फिर इंजर हो गया. अब उसको जब अब ये वनडे में सीरीज में उसको पिक नहीं कर रहे थे शायद. तो आई एग्री, to a certain extent. I can understand KL Rahul का क्यों कर रहे, but I agree with you. I don't think he should be there as the keeper, because that will cost you. I'm trying to come up with a reason why he's the backup keeper. These are the only things I can think about. Whether he should be, no, I don't think he should be backup keeper. I think he needs to play as a batsman and come on merit as a batsman, because you need a keeper in big games, man. You can't make mistakes behind the stumps. It's going to cost you. Yeah, Sanju had a 66 average in one days. Yeah, then मगर संजू का क्या But है, again, man? injury भाई, injury नहीं, तो both. नोटिस करो संजू सैमसन का, जब T20 वर्ल्ड कप आता है उसको वनडे खिलाते, T20 नहीं खिलाते. जब वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है उसको T20 खिला रहे, वनडे नहीं खिला रहे. आई डोंट नो व्हाई. अतिया भाभी के लिए need more likes on the video. Come on, lads. Thank you, Ashish, for the support. What did Babar and Rizwan do yesterday? They turned ODI into test, took required rate from 5 to 10. Really poor approach. Yeah, man, that was a very poor approach. And this has been the problem with Babar and Rizwan, for the last year or so. Strike rate has been a big issue. And again, like, I know 2 early wickets went, but then you were both set. One of you could have taken the risk and get that run rate going. It did not happen, and it put pressure on Pakistan. And Babar, that's the problem, and he struggles to switch gears. If he's playing in a slow way, he's playing in a slow way. If he starts from the start, like scoring runs, and if it's a flat wicket, there is due, he'll score a lot of runs. But on a tough pitch, I haven't seen Babar play match-winning innings. He scored runs on this tough pitch, but convincing match-winning runs, no, he didn't do that yesterday. बाबर 2 लोगों को रन आउट भी करा दिया कल in the midst of his innings and being selfish. No I think आगा सलमान वसीम जूनियर को आउट कर दिया था उन्हें. बाबर आजम, I think he was, ठीक है भाई, from his perspective I'm looking at it, he was playing a anchoring role. He was trying to be there till the end and stuff वगैरह वगैरह वगैरह. आप selfish बोल दो, कुछ भी बोल दो, but he was trying. But what he did with like Rizwan and Aga Salman's intent was the best after everybody who came. Let it be Haris Sohail, let it be Mohammad Nawaz and all of these guys coming and getting out. Aga Salman keeping Babar in front. He said, नहीं मैं तो मार रहा हूँ भाई, again ये मारना है माना. उसमें उसको आउट कर दिया. अगर आगा सलमान पिच पर रहता था, it would have been a different story maybe. He was trying to be aggressive and accelerate from one innings and let Babar play his tuk thing. But when Rizwan and him are batting, what is the solution? They're both playing tuk. One of them have to accelerate. They added a lot of pressure. Yeah.
संजू का भी स्कैम है बेचारा. Yeah, I mean, he's unlucky. There's a lot of people like, pro Sanju. Even in the FIFA World Cup, there's posters bring Sanju back into the team and Yeah. all that. So yeah, now unfortunately he's injured. Lekin he wasn't picked in the one day squad either way, even when he was fit. So वही है, उन्हें जब बड़ा tournament से उसको नहीं consider कर रहे. But I'll tell you something about Sanju Samson also. What I want to see from him is to break down the door in the IPL, like how Surya Kumar did, or like whenever he gets the opportunities, just go and smash it. Because Surya, if you remember, he was killing it in every single game, and they were sticking to Manish Pandey. And we know, out of everybody, we know Manish Pandey inside out. We watch him every single day. We used to watch him every day. We used to sit there on the TV and watch him. I believe in Manish Pandey. I believe in Manish Pandey. रोज करते थे. क्रिस गेल को देखते, हम लोग बैठ के वो मनीष पांडे को देखते थे सनराइजर्स के लिए. एंड वी न्यू कि इसका नहीं डिजर्व करता था हमने इंडियन टीम में एट दैट टाइम, और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस सूर्या डिजर्व. मगर क्या हुआ, पांडे को लेके गए ऑस्ट्रेलिया. विराट कोहली जब कैप्टन था, अब रोहित कैप्टन है. So I don't know. It doesn't matter who the captain is. There is always problems, and this is because you don't have a proper selection committee. There's a problem with politics in the BCCI, and there's always issues. So I can't give you. This has been happening in every single captaincy, not just under Rohit Sharma's captaincy. याद है फैज आपको सूर्या कुमार कितना मारा वो आईपीएल में, और डोमेस्टिक में भी उन्हें विजय हजारे उसमें कितना मारा था, और मनीष पांडे को लेके गया ऑस्ट्रेलिया. वो क्या, दैट इज ऑलवेज इंडिया मंत्रा ना भाई. एक्सपीरियंस है, ही नोस हाउ टू प्ले इंटरनेशनल. ऐसा है वैसा. अभी भी यार 1 करोड़ रुपए में कैसा क्या यार मनीष पांडे नहीं देख के क्या तुमने हैदराबाद के मैच 1 करोड़ 8 लाख मैन. मजाक है यार. कौन है दिल्ली के फैन है यहाँ पे? जरा जवाब दो यार. क्या है, करोड़ का नहीं है यार, 1 रुपए का नहीं है. अब ये साल मार रहा करते, तो अभी से भाई ज्यादा नहीं बोलते. No, but वो टाइम पे तो उन्हें सूर्या deserved it instead of it. Of course. So वो जो that time we didn't have this channel, so maybe we wouldn't talk about it. But like if Chirag bhai and these guys, we used to, if we knew them at that time, they would say the same thing at that time. देखा नसीम शाह ने अंपायर का लेग तोड़ दिया था. मोहम्मद वसीम जूनियर तोड़ा था डीप मिड विकेट से, फेंकते कि स्वेटर फेंक दिया चिच्चा जीरा जमीन पे स्वेटर. अरे तेरी बोल के फिर उन लोग का फिजियो आके उसका पाँव पकड़ के वो कर रहे थे यार. PCB appoints Shan as vice captain, then he's not picked in the 11. Babar knows how to kill competition. Vice captain चाहिए ही नहीं है भाई. vice captain सीक्रेट उनके बेस्ट फ्रेंड ही बनने वाले रिजवान बाजी. अरे 4 विकेट चले गए ना भाई. मगर मेरे को समझ में नहीं, शान मुसू को क्यों बना रहे वाइस कैप्टन? किस बेसिस पे? उन्हें रेगुलरली उसके पास क्या कंसिस्टेंट है? अच्छा इनकंसिस्टेंट है, एग्जैक्टली इनकंसिस्टेंट है, यही तो बोल रहा हूं मैं. तो फिर उसको क्यों बनाए, किस बेसिस पे? क्या है कि आई डोंट नो व्हिच यारी दोस्ती, या मे बी अब कौन से वर्जन का वाइस कैप्टन बना, T20 का वनडे का? बाबर की नहीं पड़ती उतना. लाइक आई थिंक शायद अफरीदी लिया कॉल, मेरे को ऐसा लग रहा है. आई डोंट थिंक. नहीं, बट इज दिस फॉर द वनडे और द T20 स्क्वाड? इफ इट्स अ T20 स्क्वाड, ये जो अभी चल रहा है वाइस कैप्टन है, जो अभी वनडे चल रहा. क्या है कि फिर वेस्ट. रिजवान को क्या, रिजवान नॉर्मली रहता नहीं वाइस कैप्टन. आई डोंट नो क्या. रिजवान वाज कॉल्ड द वाइस कैप्टन, या मे बी ये दोस्ती यारी नहीं बताना बोल के जस्ट. हाँ, maybe they're trying to make it like that. इमाद वसीम भी हेल्स का हाल एक जैसा है. हाँ भाई, इमाद वसीम तो आई थिंक कौन रमीज राजा जब था निकल गया था उन्हें वहां से. आई थिंक इट वाज एट दैट टाइम. इमाद वसीम इज वेरी अंडररेटेड ब्रो. इवन इफ यू गो एंड सी द T20, especially in T20 cricket, you see how he bowls in the power play. The control that he has is one of the top bowlers as a spinner to bowl in the power play. जबरदस्त कंट्रोल रहता है उसका. They said कि like he's not fit enough, he's not disciplined enough को बोल के उसको निकाल दिया टीम में से हल्लू. But I feel that he is amazing. I know Nawaz bowled well yesterday, but I would take Imad Wasim in the team any day over Nawaz. भाई उन्हें अभी भी कहाँ के खेल रहा है. ही इज प्लेइंग इन बांग्लादेश, इधर उधर श्रीलंका लीग में. डिसिप्लिन नहीं होता तो क्या इधर इतना भी नहीं लेते थे उसको. पागल बात है दिखते हो. इतना रिस्क ले रहे हैं इसके लिए. प्लेइंग ऑल राइट हैंड बैट्समैन, कीपिंग अ पार्ट टाइम कीपर, टॉप ऑर्डर, प्लेइंग फास्ट बिकॉज़ दे नो देयर इज अ इडियट बैटिंग डाउन द ऑर्डर. सुनील भाई है ना, इसलिए ससुर जी के डर से खिला रहे शायद उसको. मनीष पांडे को सब लेके फील्डिंग करेंगे. अच्छा फील्डर है, 1 करोड़. वो एक बात सही था, ही वाज अ ग्रेट फील्डर इवन फॉर सनराइजर्स. फिर एक दिन उन्हें एक मैच में लॉन्ग ऑन पे ड्रॉप करा, मेरी फिर गई थी. मैं बोला भाई कम से कम देखो चिराग भाई, मोहम्मद कैफ वाज आल्सो ब्रिलियंट फील्डर, बट यू स्टिल रिमेंबर द गाय फॉर अ 325 चेस और other chases, with great fielding. Okay, I get it, but like then that doesn't mean that you're 1 crore. Manish Pandey, you'll remember him for that 100 in the 100 11 against Deccan Chargers in that game, right, which was before. It was a dress rehearsal before the finals, before the playoffs.
Yeah, But yeah, I obviously it's agree. still. Manish Pandey didn't do that much, and उसकी technique भी थोड़ा सा अजीब दिखता था. There was no way that he should have gone ahead of Surya Kumar in that series. So it does happen in international cricket. It's That's my always point. about that experience thing, man. Even like when we thought in the T20 World Cup, Ashwin ko bithao, Ashwin played the next match, and it's always going to be that story. And I just hope it doesn't happen this 50-over World Cup where we see Ashwin coming in after Aksar and Kuldeep, and let's even say Chahal and Sundar. They've been performing consistently. चिच्चा आएंगे यूं अपना बता के घुस गए तो खत्म. Yeah, and so the next one day is Fez when on today is what? That Sunday. It's on Sunday, so that it is not a decided. It's just the third Just a game match. is just a match. I think there's not much to play for, but let's say hopefully we get to see a record getting broken or something exciting. And looking forward to that New Zealand series, the squad announcement that will be interesting. India Yeah. squad to that कौन खेलेंगे कौन नहीं खेलेंगे क्या exactly scene है उस हिसाब से, and then we're getting closer to that Border Gavaskar trophy. So yeah, वो तो बहुत जबरदस्त लगने वाला है. ये वाला कमेंट हर पर्ची एक टीम में है इंग्लैंड अली इंडिया पाकिस्तान नवाज. मेरे को मोइन अली तो बहुत पसंद मगर इंडिया केएल पाकिस्तान नवाज है. Crick Info reported that PCB are considering split captaincy, not sure which format captaincy they will take from Babar. I think they'll take test captaincy from him. They should just take everything from him, let him focus on his batting, but he doesn't want to give it away, obviously. I've been saying that for a long time. They should take everything from him. Dead rubber में तो हो जाते 400 मार सकते हैं. बात तो सही है. बांग्लादेश के अगेंस्ट डेड रबर में क्या मारे थे उसमें जो ने ईशान किशन 200 मारा था नहीं. या उसके बाद नहीं लिया उसको. हाँ डेड रबर में तो कोई भी प्रेशर नहीं. बस अगर कुलदीप को ड्रॉप करे भाई, we all march to that pitch. अगर कुलदीप ड्रॉप हुआ इसके बाद तो. Yeah. Faiz, you're from you've lived in India like me, like I've visited, like I'm from India but I've never lived there. And how can you tell me a bit about the pitches and whether in like during this time and then when the World Cup is going to be in October? I think in the summer IPL time it'll be a bit dry, there will be turn on off and everything, but I think October is the start of the season if I'm not mistaken, like just after the monsoons, right? Like September October is the start of the India season. So will the pitches be fresher? Will they would you play 3 spinners or actually you might need to play 2 spinners and an extra fast bowler? मेरे हिसाब से देखो, the way I'm looking at it, if we're looking at seasonal wise, देखो पहले तो अब आईपीएल के टाइम पीक समर रहेगा, उसके बाद अपना जुलाई, यूजुअली बोलते जून से मानसून, जब स्कूल में पढ़ते थे, अब तो जुलाई अगस्त में आ रहा मानसून. एंड दिस ईयर इट वाज लाइक अक्टूबर में भी बारिशां बेहतरीन हो रहे थे, लाइक इट वाज रेनिंग कंसिस्टेंटली टिल एंड ऑफ अक्टूबर. तो मेरे हिसाब से I'm looking at it this year specifically, I feel like it will be also recurring monsoon, जो साइक्लोन आता फिर बारिशां दबा के होते. So there will be a that dew factor and stuff. There will be a lot of water around the outfield maybe towards the end of it. Obviously it depends again where we're playing. If we're playing in Mumbai, if we're playing in cities like which are next to the sea or something, then again automatically dew factor रहेगा. I would definitely have point out कि भाई spinning option better रहेगा to play with those spinners, and then 1 fast bowler, 2 fast bowlers maybe. Yeah, so that's normally how I feel. October की pressure will be fresher, dry से एकदम wet होने के chances है. Yeah, I from what I know, like I think that it's the start of the season, so you'll see some good batting pitches. There'll be some flat wickets. There'll be some moisture as well initially. Like, I think in the first few games or whatever. Because abhi monsoon is coming more like towards October as well. Yeah, so you will have moisture and it'll assist some fast bowling. And then as the tournament progresses, like any other tournament, the pitches will wear a bit, and then probably in November, mid-November, there will be some turn on offer, and it'll be like that. Because I remember the last World Cup, which was in India in 2011, that was Feb March. That was just before the summer, or just like Indian summer, you could say, on borderline, right? Feb March and April 2nd ko shayad final tha. So this is going to be a bit different. This is going to be early start of the year, like closer to winter time. And in the northwest, the matches in the north and south, it's going to be cold, right? November-ish, it will be a bit cold. So let's see what happens. Mustafa, bhai, India may it really changes from state to state. To state to state. Mumbai mein batting pitches. So is it like depends on where you play? Is it like this throughout the season, Chirag bhai? Do you think it's like this at the start where it's a batting pitch and then becomes a turning pitch? Let me know what you think. Gunnur Padi kahan hai bhaiya? Kidhar hai bhai? कोई नहीं, यही है नहीं गुन्नूर पाजी हमारे. गुन्नूर पाजी से जी, गुन्नूर पाजी तो बहुत टाइम के बाद है. बहुत टाइम के बाद है.
उसको डर लग उसको डर रहा लग रहा है है उसको। करके मेरा कल अगला कल मैच। खेलूंगा या नहीं, या डेफिनेटली अभी तो नहीं होगा, अभी ही इज प्रोटेक्टेड। वी नीड टू प्रोटेक्ट कुलदीप एट ऑल कॉस्ट्स। Where is the guarantee, bro? I don't know. Guarantee will be in next one day. He man, they can't. If they do that now, भाई रोहित शर्मा will guns blazing हो जाएगा भाई। No, because टेस्ट में परफॉर्म कर लिया बिठाए, अब अगर वनडे में परफॉर्म करे बिठाए, फिर चाहल को लेके आए जो फेल हो रहा, खत्म रोहित शर्मा वहीं खत्म है। सैंडविच बना के उसको खा लेंगे लोग। Yeah, I think he definitely Kuldeep Yadav There's to no Sumit. way that Kuldeep Yadav cannot play the next match unless they're mad, but they are mad. You can't say. Sundar is on the squad, right? Yeah, Sundar is in the squad. Sundar for Akshar Patel, one match just to try it out. Even though Akshar Patel I is won't form. mind. I won't mind. That's what I'm saying. 2-0 ho gaya. Let the other people play. Let them, roll in the mud and see where they're at right now compared to the 11 which won the tournament. Please I go ahead and do that. Yeah, I feel that there should be a bit of rotation. Of course, you don't change the whole outlook of the team, but there should be a bit of rotation because you have back-to-back series. You have enough time until the World Cup to prepare. And yeah, I just feel thoda rotation. I think Shami will. I think they'll have Shami sit down. That's what I feel. Shami might sit down. Sundar for Hardik भाइयों, let's check 3 spinners, 3 fast bowlers. Then हार्दिक भाई को डालना पड़ता 10 ओवर उसके ऊपर नहीं, हार्दिक को बिठा बोल रहे। Yeah, Sundar for Hardik. So he's saying let's change the dynamic. 3-4-3. It's risky because Hardik is more experienced, but that doesn't mean Sundar is not capable. He's capable with the bat 100%, but it's risky. रोहित शर्मा कंटिन्यू रन नहीं मारता है, नहीं मार रहा उन्हें, वो तो बात सही है आपकी। He doesn't score consistently, मगर उन्हें जब मारता जबरदस्त मारता। I think the first match उसकी इनिंग्स बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छा खेला था, लेकिन या आज उन्हें नहीं मारा। आपकी बात बिल्कुल सही है, कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहा रोहित शर्मा। एंड एज योर कैप्टन ओपनिंग बैट्समैन यू नीड हिम टू बी अ बिट मोर कंसिस्टेंट, but he is scoring runs at certain times which are very effective runs. When he does score, he takes the game away from the opposition. When he came out injured that time, me and Faiz saw against Bangladesh, he almost won it for India, and that was almost an impossible situation. So he's a match winner, but of course we expect more consistency from him for sure. वो थिंग में रोहित शर्मा भी कहा अंशुल भाई, उन्हें इंजरी से आते जाता तो उसको वैसा भी प्रॉब्लम है चिचागो के, उन्होंने कंसिस्टेंटली खेलते इतने होता, बट जब खेलते बहुत तगड़ा खेलते हैं। बट या वी नीड टू सी मोर इन टर्म्स ऑफ लाइक एटलीस्ट अ प्रॉपर रन ऑफ सीरीज एंड इनिंग्स सो दैट ही आल्सो कैन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड वेयर ही स्टैंड्स। बहुत जरूरी है। Ranji 4 दिन का हो गया है, so pitches don't change much. You can see which scores in Mumbai game, pure batting pitch, Punjab fast bowlers pitch, Chennai spinning track, it stays same throughout. But the thing is, this T20 we saw in Mumbai Faiz, that one was a good pitch to bowl on, right? हम लोग 220, 250, 30 predict कर रहे थे वानखेड़े में, but अच्छा pitch था and क्या बोलते, so India defended 160. It wasn't like Sri Lanka chased it down, so it was actually conducive to bowling. Yeah, 100%. गिल क्या बोलो, सुंदर फोर्स मारता है, फिर हल्के में आउट हो जाता है, यार वही सी ऑलवेज लुक्स द मोस्ट ये एवरी टाइम दिखता है जब पिच पे आता कि सेंचुरी मारने वाला है। स्ट्रोक प्ले इसके ऐसे कुछ भी नहीं, जो उसकी रिस्ट एक्शन है बहुत जबरदस्त है। ही नोस हाउ टू फ्लिक इट, ही नोस हाउ टू क्लियर द बाउंड्रीज, हर चीज सही है। और आज भी जो उन्हें कवर ड्राइव मारा बहुत प्यारे मारा, फिर लाइक आप बोले बहुत हल्के में उन्हें आउट हो गया, फिर अक्रॉस द लाइन वही वाली शॉट मारे और इजीली पकड़ लिया। सो आई डोंट नो, दिस गाय इज potentially very good, but he needs to understand his shots and he needs to understand what his role is in the team. I think that is something. आज विकेट कड़क थे, ठा खोल के आवाज आए थे, बहुत जबरदस्त थे। अरे रे मैं 69 मेगा को सब्सक्राइब किया तुमने, फाइटिंग लव गलत आईडी दी नहीं आशीष भाई, आ जाते हैं उन लोग, ब्लॉक करना पड़ता। सिराज उमरान अच्छा कर रहे तो थोड़े रन्स लीक करते हैं, लेकिन जब तक वर्ल्ड कप आएगा अगर ये कंटिन्यू रखे जाएंगे, बॉलिंग अटैक है तो बुमराह जो उसका इंजरी है क्या होगा, बुमराह सीधा खेल गया, इनको लेके इनका जगह लेंगे क्या, बेसिकली बोल रहे कुन्नूर पाजी। अगर बुमराह मेरे हिसाब से आई डोंट, एक चीज बोलूंगा, जो सिराज डजंट लीक रन्स, लाइक सिराज रिसेंटली हैजंट बीन लीकिंग अ लॉट ऑफ रन्स, ही हैज बीन मोर ऑफ अ कंप्लीट बॉलर। ही उन्हें वही बोला था कि भाई फील अच्छी हो रही है, मैं आउटस्विंग को जब से सीखा मुझे मजा आ रहा है आउटस्विंग डालने में, स्विंग भी डाल रहा है। तो रिसेंसी में अगर अपन देख रहे हैं, सिराज हैज बीन वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी गुड एंड फिनिशिंग हिज स्पेल ऑन अ गुड नोट। आज इवन क्लीनड अप द टेल, जो अपने एक कंप्लेन हो रही थी कि भाई टेल नहीं कंप्लीट कर रहे, एंड ही डिड दैट एज वेल अलोंगसाइड उमरान मलिक। Mustafa will tell you because speed भी है and stuff like that, but yeah, Mustafa.
go ahead, sir. Yeah, in terms of Siraj has a tendency to leak runs. It's right, but the wickets that he's picking up in the power play is Yeah. really it's very effective. It's helping India a lot. अगर आप देखें बांग्लादेश सीरीज में भी सिराज leaked runs towards the death overs, so वहाँ पे उन्हें पिटा था बांग्लादेश में. तो there are times where Mohammad Siraj has leaked runs, and I agree with that. उमरान मलिक का extra pace है वो भी कभी use होता, मगर अगर दोनों wickets ले रहे हैं तो देख लो, that's the key. You need wickets in 50 overs. If they get hit a bit, it's okay because you have the batsman to cover that up. That's what I feel. And it's not always they're going to get hit. There are going to be times where they're going to bowl well. Today, I felt that he was very good, Mohammad Siraj. I felt he bowled pretty well. थोड़े आउट बाउंड्रीज आज भी खाया, लेकिन आई थिंक इन जनरल ही हैज इंप्रूव्ड हिज ओडीआई बॉलिंग. और आप एक और सवाल पूछ रहे बुमराह का. देखो, बुमराह का ये है कि अगर वो एक महीना फुली फिट है और एक महीना क्रिकेट कंटिन्यू से खेला है, 1-2 महीने, और विकेट्स अच्छे ले रहा है, एंड ही वॉक्स इनटू द टीम फॉर मी, बिकॉज समवन लाइक जसप्रीत बुमराह, I think he walks into any team. He can provide with the new ball. He can bowl at the death for you. यॉर्कर जबरदस्त, उसके बाउंसर्स बहुत अच्छे, पेस अच्छी है उसकी, वेरिएशन है, कटर से, स्लोअर बॉल से. तो जसप्रीत बुमराह मेरे लिए ही वॉक्स इनटू द टीम. तो या, बट ही हैज टू बी फुली फिट. ऐसा नहीं है कि भाई फिट नहीं है, आ जाता है फिर बैक इंजरी, देन ही पुल्स आउट. क्या इस साल कोहली सचिन के रिकॉर्ड को क्रॉस करेगा? 50 सेंचुरीज इन ओडीआई, कोहली ऑन 45, और इस साल बहुत ओडीआई हैं. आई थिंक कर देगा 50 ओडीआई का, 5 सेंचुरी मानना है. लाइक्स करो पहले, फिर कमेंट करो. ओहो, हार्दिक को 3 ओडीआई में रेस्ट करा दिए, उसे T20 भी खेलना है. या आई थिंक 3rd ओडीआई में हार्दिक और उमरान मलिक दोनों को. फिर मैं अभी आ रहा हूँ. Yeah. नहीं, हार्दिक का डेफिनेटली रेस्ट फैक्टर तो है, एंड हार्दिक शुड गेट रेस्टेड, बट आई थिंक इट्स एक्चुअली गुड दैट इफ ही प्लेज आल्सो. अगर मैं देख जिस तरीके से देखा, ही हैज बीन इनकंसिस्टेंट. अंशुल भाई काफी टाइम से उन्हें नहीं रहा है, काफी टाइम उन्होंने बाहर जाके आ रहे बैक, तो जितना उसका बैक विल बी यूज्ड टू द सर्कमस्टेंसेस एंड मैच फिटनेस, में भी अच्छा भी है कि उसको खेलने का मौका मिल रहा है, ताकि वील नो वेयर ही स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ इंजरी. अगर फिर आप बिठा दोगे, फिर उन्हें वापस बैठ के फिर वापस आके फिर इंजर हो गए, आई डोंट नो. मेरे हिसाब से maybe let him play this series and then just let him rest against the first match, maybe the next series का. But अभी के लिए let him play so that he is, we know that where he's standing, and if he can fully fit. तो हार्दिक भी नहीं हुआ आज तक. fully fit तो नहीं हुआ हार्दिक आज तक, हो जाएगा hopefully someday. You can fix loose knots. I can't believe they're depending on one all-rounder, man. It doesn't work like this, bro. It doesn't. I can't believe it. But Kuldeep is now your second all-rounder. Bro, fast bowling all-rounder bowler. Fast bowling. Yeah, fast bowling all-rounder तो कभी नहीं रहा अपने पास. It can't be. What are your thoughts on Australia withdrawing from Afghanistan ODI series? Man, for me, I feel, I don't know, man. It was a very, I mean, I get your intention. It's very good. Maybe you could wear a black armband or something just to show your support, but let's not mix the sport with politics. I think that is something I wouldn't recommend. And it wasn't like they were playing the series in Afghanistan. They're going to play in Dubai, so Dubai, yeah, it's going to be safe for them and everything. So I didn't get it either. Like, very conveniently, maybe they just did it so that they can withdraw and be practicing for. And they gave a reasoning, but they've also withdrew from a test before as well. South Africa, no, just withdrew from the South Africa withdrew and cancelled for that domestic. तो वहां से एक छुट्टी मिल गई आपको. South Africa ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई कैंसिल हो गया, अभी ये कैंसिल हो गया. No, there was a test match between Afghanistan and Australia last year scheduled. Yes. There also Australia pulled out, right? So I don't know what's happening. जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या अफगान प्लेयर ने का बीपीएल छोड़े क्या बोले, हाँ छोड़ दिया था. कौन है वो प्लेयर? नबीन उल हक था आई थिंक. आज उन्हें बोला भाई खुदाफिज, मैं नहीं खेल रहा हूँ बीपीएल बोल के. No even came close to being a fast bowling all-rounder. दीपक चहर बैटिंग, क्या इंजरी हो गया? शार्दुल ठाकुर आया, मोटा हो गया. हार्दिक ने कोई काला जादू कर रखा है. अब आई डोंट नो क्यों, रीजनिंग क्या है, मगर आप अभी की बात नहीं, पहले से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं इंडियन क्रिकेट देख रहा हूँ, ऑलराउंडर का मसला है. आई वाज नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू सी कपिल देव प्ले लाइव, लेकिन आई थिंक he was probably the best all-rounder India had from what I've seen on YouTube, what I've seen from the movie. But that's like 39 years ago. What happened? 39 years में अगर अपने का नहीं, कौन है आपके पास? रॉबिन सिंह.
नहीं यार, रॉबिन सिंह भी हाँ पार्ट टाइमर था, यू कैन से, बट लाइक तो कौन, यही तो बोल रहा, नहीं है, नहीं है मैं वही बराबर। बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आई एम मैं एग्रीइंग विद यू, आई हार्दिक एम पांड्या सेइंग से क्यों चिढ़ता हूँ? नॉट बिकॉज ही इज नॉट गुड इनफ, बिकॉज ही बिकॉज़ ही has the talent, he is not fit enough, he doesn't like, and then like also I feel he's not mentally strong, bro, compared to मे the बी other guys. इरफान पठान, वुड यू कंसीडर हिम टू बी एन ऑलराउंडर? No, उन्हें जब बैटिंग करा, बॉलिंग उसकी वो हो गई, नीचे चले गए। फट। या आई डोंट थिंक कोई हार्दिक का टेस्ट में अब मुश्किल खेलना लगता है। बिकॉज उन्हें भाई, अगर उन्हें फुली फिट है तो खेल सकता था। अगर आप याद है साउथ अफ्रीका सीरीज जब टूर कर रहे थे इंडिया 2018 में, जब कोहली कैप्टन था, हार्दिक खेल रहा था एज ऑलराउंडर, उसमें उन्हें पंजाबी लिया था मेरे हिसाब से, आई थिंक वो सीरीज में ही टुक अ 5 विकेट हॉल इन वन ऑफ द इनिंग्स when Virat Kohli was captain. So he will provide you that, but you need him to be fit. But also, I don't blame him completely. I also like the grassroots level. You need to develop all-rounders. You allow them to bat, bowl. I think because of the competition in India, everyone takes one skill and just focuses on it so much because they want to be best in that skill to get into the team. But here is another thought: if you can do three things half decent, then there's better chance for you to be in the team, because there's a lack of all-rounders available right now in the country. Fast bowling या all-rounders. Hockey World 100%। Cup है, Hockey World Cup. यस, एंड वी सॉ ना कौन, रणवीर सिंह ही कुछ करा शो, ओपनिंग सेरेमनी उसकी, रणवीर सिंह एंड फ्यू एक्टर्स एंड स्टफ। हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी तो देखते नहीं हम लोग, लाइक आई डोंट वॉच अ लॉट ऑफ हॉकी, बट या आई मीन सो वर्ल्ड कप में कोशिश करूंगा देखने के लिए। मैं ओलंपिक में ही देखा था, ओलंपिक गेम्स देखा था, जो अभी लास्ट हुआ था क्या, या उसमें मैं देखा था हॉकी। उसमें इंडिया अच्छी खेली थी। आई वाज वाचिंग विद आशीष पंटर एंड दीस गाइस. Australia also pulled out of the SA Test series in 2021 due to COVID-19 fears, even after being assured of safety by CSA. They even sent inspection officer and gave green light, still pulled out. So that's the thing. Australia have this tendency to do that, and I feel bad like for South Africa at that time for बट one. या बट आई थिंक दैट्स नॉट फेयर एट ऑल, बिकॉज देखो बोर्ड भी पैसा खर्च के भेजती है यार टीम को, आप यू नो एंड देयर लॉट ऑफ अरेंजमेंट दैट हैपन, दे नीड टू रिस्पेक्ट दैट। आप ऑस्ट्रेलिया है तो क्या आप इंडिया कुछ भी करते, इंडिया के अगेंस्ट करके बता लो, बोलता हूँ मैं, इंडिया खा लेती बोर्ड इंडिया की। बहुत बहुत खबर है किसकी भाई, कई की। झाड़ू है विनय, वो झाड़ू, टोरंटो का झाड़ू, मिस्टर विनय हरिहरन इन द हाउस. Yeah, Faz, I think that pretty much wraps it up. If you guys have any last minute questions, you can ask us. Any comments यहाँ पे है. All rounders take time to develop. Also, जडेजा जब आया था तब his batting was not this good. हार्दिक भी इतना अच्छा बैटिंग नहीं था. वेंकटेश आया, उसे एक सीरीज में पका दिया. पेशेंस नहीं है इधर. I don't know why it takes time to develop, because you see other countries, they तो उन लोग पैदा करते रहते रोज ऑलराउंडर्स को, और अच्छे, like for example, there's only one Ben Stokes, but you have someone like a Sam Curran. He's a very good backup, right? Like he's someone who think, like Australia have Stones, they have Mitchell Marsh. There's plenty of options in each team. थिंग इज द वे इंडिया इज असेंबल नो है, लाइक इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट हमेशा वैसा रहता ना, ऊपर वो चार के स्पॉट फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, एंड देन एक विकेट कीपर 5 हो गया, फिर 4 बॉलर होना वहां 9 हो गया, और 2 बीच में कहीं ना कहीं से ये या तो बैटर बना लेते हैं या स्पिनर। तो आई मीन ऑलराउंडर की मेंटालिटी नहीं है, लाइक इन टर्म्स ऑफ एन इंडियन क्रिकेट ओवरऑल में अगर आप देख लो तो दैट्स समथिंग। In terms of all-rounder talent is missing. I don't think it's that. I think they just talent को India बिकॉज में. लाइक मुस्तफा सेड, बिकॉज ग्रास रूट लेवल पे अगर आप देखो, आप या तो आप बॉलर है या तो आप बैट्समैन, आप दोनों If का you भी look कर at नहीं the सकते। coaching system, Faiz, I एंड देन think अगेन देयर इज सो मच। हाँ, we have to look at the coaching system. I think like when you go to India, we should go and check like what's happening, how the kids are coached and everything, so we get an idea. Also, maybe they tell the kids, भाई आप बता दो पहले, आप बैटिंग करें या बॉलिंग करें, दोनों नहीं होंगे आपसे। देखो या तो पूरे ऑलराउंडर्स वहां पे अटक जाते हैं जहाँ पे आपको खेलने का जब मौका मिलता फिर लाखों पैसे आपको निकालना पड़ता, तो वो जितने फिटनेस का भी इशू हो सकता है भाई, फिटनेस का भी इशू हो सकता है। आई डोंट नो क्या है, like probably domestic selectors need to look into it. Probably they have to look into it. Everyone has to look into it. अगर कुलदीप यादव बैटिंग के साथ भी कंट्रीब्यूट कर देता है, ऐसा टेस्ट में करा, आज करा थोड़ा एक करा लेकिन खड़ा था थोड़ा, तो वर्ल्ड कप में इंपॉर्टेंट हो सकता है बैठने से पहले। तो या 100% गुरनर पाजी, दैट्स व्हाट आई वी बीन सेइंग कि भाई कुलदीप यादव बहुत इंप्रूव करा अपने आप को। यस देयर वाज अ टाइम वेयर ही वाज नॉट परफॉर्मिंग, बट उन्हें जिस तरीके से वापसी करे हैं उन्होंने अपनी, उन्होंने बांग्लादेश में भी 5 पर लेके बेचारों को बिठा दिए, दैट वाज अनफेयर ऑन हिम, आज करके कल बिठाए बोले तो दैट विल बी अनफेयर अगेन ऑन हिम। So I don't know what Kuldeep Yadav has to do. He's broken the door, he's broken the howl. घर में अब उन्हें कांच तोड़ना बाकी है उन्हें खाली, तो और क्या ही करेगा बंदा, मतलब फिर तो आप खुल्लम खला देख लो, आप डिस्क्रिमिनेशन है फिर तो।
Who's winning SA T20 today? 73 of 24 to win for Sunrisers. Unfortunately, I think Pretoria Capitals will win, but that's sad for me. Sunrisers will win the hearts. Yeah, man. They need to first of all distribute and auction properly. पूरे player तो वहीं चले गए. अगले मैच इब्राहिम भाई, अगर आप अगले हफ्ते जा रहे हैं और दीदी को देखे तो शूट दीदी आउट ऑफ द ग्राउंड, टेल हर टू गेट आउट ऑफ द ग्राउंड. जब रह रही हार जा रहे, चिल्ला No, डिस्ट्रैक्शन. oh, she was there when we reached the knockouts as well. Yeah, She came late probably. no. She came late probably. But yeah, and any other news you want to discuss? Is there anything? Tomorrow there's the Ireland, Pakistan New Zealand. I think आयरलैंड जिम्बाब्वे की भी सीरीज चल रही थी, if I'm not wrong. मेरे को जो पीछे से याद आ रहा था, I think Zimbabwe and Yeah, Ireland were also Zimbabwe playing. जीत गई 5 विकेट से. First T20. सिकंदर खेला क्या? कैसा नहीं खेला? हैं? नहीं खेला सिकंदर. से बोल रहा हूँ. But सिकंदर नहीं खेला आज. सिकंदर ने क्या, मैं अभी स्कोर चेक कर रहा था. शॉन विलियम्स खेला, गैरी बैलेंस वो वाला है इंग्लैंड का जो था सो. नहीं, राहुल समाधान. wasn't it? वही है उन्हें. वही. Yeah, I think पासपोर्ट चेंज कर लिया, उसको मालूम हो गया अब नहीं मिलती जगह उसको, so he maintained his balance. अरे यार, ढूंढ रहे हैं बॉलर जो बैट कर ले है अच्छे. बॉलर्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है. क्यों नहीं बोलते अपने बैटर्स को बॉल करो जो रोहित 3 हैट्रिक है कोर. गुरनुरपा जी, आप काफी शायद टाइम के बाद रोज यही सर मार रहे हैं हम लोग. लिटरली रोज यही सर मार रहे हैं और रोज यही खुजा रहे सर अपना कि भाई विराट कोहली ऐसे लोगों को बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे. और बैट्समैन के बॉलर्स के हद तक अगर मैं देखूं, दे आर ट्राइंग बैटिंग. यू हैव सिराज हु कैन बैट अ बिट, यू हैव कुलदीप हु कैन बैट अ बिट. सिराज कैन बैट, मुस्तफा, वी नो दैट राइट, फॉर अ रीजन. एंड but like फिर भी मार सकता, but like we still don't know about शमी शायद थोड़ा शमी मार सकता. अब सिराज, the thing is, look, there will be times where these guys, as they play more games, they will develop, they will be able to hit more. जैसा end of उसके Zair Khan was also swinging the bat and he had some useful innings. बालाजी भी आके swing करके छक्के मारा. ऐसा नहीं है कि like you'll have, but consistent wise नहीं है वैसा, like consistent. But I still think you will not expect anyone after number 7, number 8 maybe. बस number 8 तक है. Bumrah put on a match-winning partnership in England last year, 2 years ago in that COVID-stricken series over there. Match-winning partnership, last wicket partnership. Both of them hit 50s, or it was a big partnership that time. But उसके बाद फिर नहीं consistently नहीं कर. You don't expect that from them. One off तो हो जाएगा. But वैसे सिचुएशन में one off भी हो रहा है, I would take that, right? I would take it from them, yes, but then you need, but in a consistent business, you need an option as well. You need someone who can give you consistent, like a Pat Cummins, for example. You need somebody like that as well, right? Shivam Mavi did give certain hopes that he can bowl and bat, so let's see. Raza is in UAE T20. That's why he's not there. 2023 ODI World Cup में कुछ overcome होंगे क्या 40 ओवर? मेरे ख्याल से नहीं भाई. अभी ये साल कई को अंशुल भाई आपको 10 ओवर कम के डॉक कर दे रहे. अनलेस लेट वेट आए और मैच टाइमिंग कुछ गड़बड़ी करे तो मे बी सिर्फ जब भी डॉक होते हैं ओवर्स और लाइक बारिश. मैं एक चीज बोलूं, 50 over World Cup is the classic World Cup. It's what we brought up on. It's going to be better than any T20 World Cup. 50 over is always the best, bro. You're gonna enjoy it. क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप पर बहुत प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया में है. बहुत प्रेशर रहने वाला है. आप जीते भी तो कोई तारीफ नहीं करेंगे, बोलेंगे आप होम पे खेल रहे हो. अगर हारे तो फिर कूट के देंगे. मतलब देयर बी. लास्ट टाइम होम पे था तो क्या हुआ था, यही होगा कि लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप जीते बहुत सवाल में आ जाएगा फिर. No, in general, like there will be a lot of criticism. Yes, Balance, who played for England, he's originally from Zimbabwe. He applied last year to move back, and ICC finally approved late last year. He was actually trying to be available for T20 World Cup. Oh, that's crazy, man. Good information there. Very helpful. Are Vinesh Bhai? No, Vinesh Bhai, good morning. No, hopefully he's not benched. Vinesh Bhai, hopefully he play. He deserves to play, man. I don't think the reason why I'm saying hopefully is because after he was man of the match in the test match, he got dropped. So I'm also concerned, but I think I don't see it happening. Now if it happens, because सवाल सीधा रोहित शर्मा से पूछेंगे ना, why is Kuldeep being dropped? He's gonna take a flight straight to the stadium, and I'm taking straight to the stadium, man. Me and Chirag Bhai will go first and talk to Rohit Sharma, then we'll talk to KL Rahul. बहुत प्रेशर. मतलब KL राहुल का क्या होने वाला है भैया? जान दो भाई. देखो अब लेट्स से शादी के बाद मैच्योर हो गया होगा. लेट्स सी, देखते हैं हाउ इट वर्क्स आउट फॉर. 10 महीने है अभी, 9 महीने. सो लेट्स जस्ट टेक इट 1 month at a time, 1 series at a time.
And देखो चिराग भाई कल I'm never going to rule out this factor that केएल राहुल अगर कंसिस्टेंटली मारना शुरू कर दिया फिर अपने भी मुंह बंद हो सकते हैं, इसलिए बैंटर का ये चीज है, करो लेकिन एक हद तक करो, लाइक यू नो थोड़ा थोड़ा एरिया दे दो फिर, वरना वो पलट के वापस आता है काटने। मगर ये बताओ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ओपनिंग बैट्समैन कौन रहेंगे? रोहित शर्मा एंड या शुभमन ही दिख रहा है मेरे को भी के हिसाब से। रोहित शर्मा एंड केएल राहुल आई थिंक will be your opening match. Yeah, because KL Rahul is a wicketkeeper, he'll come two down. No, he'll open in the test. You'll see. Let's see. Gill cover yeah, very high placing. throws wicket every time. Yeah, and he has to become more mature, I think, because like he is still young. He's going to make mistakes, but he'll have to really change that, because international cricket, you can't, once you're looking in such good touch, especially, you know, there's no technique issue right now, there's no problem like that. उन्हें अच्छा खेल रहा and shots अच्छा रही, timing अच्छी हो रही, वो time पे आपको capitalize करना पड़ेगा। जो भी opposition है, जो भी pitch है, जो भी conditions है, अगर आप set हो गए, आपको like उसको वो करना। Even in the last game, I was upset he didn't get to his 100. He should have got to his 100. He needs to make hay while the sun shines, because, especially because of the competition in India. अब उन्हें 2-3 fail होंगे, everyone will forget about that 70 and those 2 cover drives. No one's going to remember. पूछेंगे runs के centuries किधर थे. So once you start an innings like that, you have to finish it off properly. वर्ल्ड कप 2019 के जैसा हो हर टीम से मैच, आई थिंक वैसे ही होगा। नहीं फर्स्ट जो फॉर्मेट को अपने को कौन बोले थे फॉर्मेट बोलते, आई थिंक इब्राहिम भाई और लाइक मनोज भाई वाज नहीं टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट, आई थिंक वैसे ही है अभी ये टाइम पे, सो दैट एवरीबॉडी गेट्स अ टेस्ट ऑफ एवरीवन, ऐसा कुछ था। ये गौतम गंभीर साहब का कोहली से इतनी क्या दिक्कत है? गौतम गंभीर इज वेरी क्रिटिकल, ही इज वेरी ओपन इन टर्म्स ऑफ द वे ही and he has no filter. गौतम गंभीर काफी क्रिटिसाइज करा, आई थिंक टी20 के बाहर है, आई थिंक वही वाला बोले गुनूर पाजी अब जहाँ he said अभी रोहित शर्मा and विराट कोहली cannot get in the T20 squad or something like that. I think Gambhir, I mean, everyone's entitled to their opinion. Everyone can say what they want. Like, it's like, it's, everyone has a right to say what they want. लेकिन also I think शायद बनती भी नहीं राइट उतना गंभीर और कोहली की, like IPL में जो confrontation हुआ के बाद हो सकता। या सेम फॉर्मेट है वर्ल्ड कप 2019 के जैसे है अंशुल भाई। यस इब्राहिम भाई तो हमारे संवाददाता साउथ अफ्रीका से भी कंफर्म कर दिए इब्राहिम भाई। या डेफिनेटली, सो या आई मीन अच्छा रहने वाला है, बट ये तो ही बोलूंगा वन सीरीज एट अ टाइम लेट्स, एंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया का तो सबसे बड़ा टेस्ट है अपने लिए, अगर ऑस्ट्रेलिया पार करे फिर देखना पड़ेगा क्या होगा। Australia Park is not the सबसे बड़ा test. It's going to be the World Test Championship final. You've been there, done that. You've beaten Australia in Australia to qualify. Now you're going to play them home. You've been there, done that. So you're expecting to beat Australia. I know that it's not going to be easy, and maybe India are out of the World Cup, World Test Championship final and they might not even make it if they lose a couple games against Australia. But Sri Lanka also has to win, right? It's like that something. Someone has to win. Also, I think everyone has a chance if India don't win like 3-1. I think everybody will have a chance. Yeah, other teams have to win as well. You're right. So a lot is dependent on, but I'm not 100% convinced until thing. But even if they make it, it doesn't mean you've achieved everything. You've already been a final. Yeah, you've already been in the final once. Yeah. So it's about taking the next step. बोलता है कंपेयर ना करो उसको सचिन से, नो डाउट नहीं करना चाहिए, सचिन अलग लीग का है, लेकिन अगर आज का रूल्स इतना इजी है तो आज टाइम में सिर्फ कोहली है टॉप 10 में 73 सेंचुरीज के साथ। एंड देखो कोहली का एक और चीज है, कोहली बहुत ज्यादा और फॉर्मेट्स खेला एंड आई थिंक ही प्लेड, बट सचिन का यही है कि सचिन के एरा में जो फास्ट बॉलर्स थे कोहली के एरा में वैसे फास्ट बॉलर्स नहीं है, लाइक शोएब अख्तर एंड मैगरा एंड वसीम अकरम वकार, यूनेस को मार के फोड़ता था, बट देयर इज लाइक ऊपर नीचे बढ़िया सचिन, different types of batmen, different roles पे भी वैसा अगर मैं differentiate करूँ तो। But look, I don't like comparing different generations. I love doing it, but I don't think it's right to do it. I mean, I'll do it if you want. I can give you an opinion. No, just an opinion, yeah, nothing else. But if you talk about fast bowling, this and that, फिर मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई सुनील गावस्कर ग्रेटेस्ट है, उन्हें और अच्छी bowling खेला, कोई वक्त उन लोग से भी और अच्छी खेला, मैल्कम मार्शल खेला इन लोग को, all these guys, the great West Indian Michael Holding इन लोग को खेला उन्हें, so without a helmet खेला, और वो टाइम पे सचिन के टाइम पे फिर भी बेटर था, उसके टाइम पे तो लकड़ी थी वो, तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो फिर बहुत रहते हैं आर्ग्यूमेंट्स।
agar I agree with what Gurnur Paji is saying, because you have to look at current. You're comparing him to current modern. I'm not okay. You don't want to compare. You shouldn't compare to Sachin. That is also right from Gambhir. But to say that he's playing easier bowling, this that, I don't take all that into consideration, because you're still playing a lot of formats. And how do we know it's easier bowling? It just maybe he's making it look easy like that because nobody else has that Yeah. many centuries. Haris Rauf, if Yeah. you deliberately say, I Hmm. don't think Babar Azam can hit that off the back foot for six. Virat Kohli can. तो यही बात है, right? Like अगर वैसा था तो why don't people chase as consistently as Virat Kohli does? Why does his record so high compared to the other ones if batting is so easy? He makes it look easy. He's mentally very strong. I feel that maybe he's not as talented as Sachin. Sachin is the most talented batsman that I've seen, just from what I've seen, like from live cricket. But his match-winning mentality is above all. Like Yeah. he, in a chase, I would take Kohli over Sachin. Overall, Sachin has more shots. He has less weaknesses. If you look at the bat and his timing and everything, Virat Kohli said it himself. Like if on Breakfast of Champions, if you saw a few years back when he came on with Gaurav Kapoor, he said, "Ki bhai, like you can't compare. That guy is the one why I started playing cricket. He's the reason I'm starting to play. I'm nowhere near to him." He said it himself. So या बिकॉज सचिन को मानता है वो हम्बलनेस तो है ऑब्वियसली सचिन के ऊपर कोई किसी को नहीं मानते इंडिया में आई डोंट थिंक देयर एवर बी अ प्लेयर लाइक सचिन तेंदुलकर एंड नो वन विल हैव द गट्स टू से दैट बट या आई मीन अगर अपन मैच विनिंग मेंटालिटी में बोलो डेफिनेटली कोहली स्टैंड्स आउट नो हैंड्स डाउन कोहली सेंचुरी मारा तो बोला आज के टाइम में 5 खिलाड़ी सर्कल में होते। हाँ, ये बोला था उन्हें, अब मुझे याद आ रहा है, ये सर की 5 खिलाड़ी। देखो ये सब लाइक बातों के है, लाइक वी डोंट नो अब वुड सचिन बी फिट इनफ टू प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स एंड स्कोर दीस मेनी रन्स, वी डोंट नो, राइट? ये भी नहीं मालूम। आप 5 खिलाड़ी भी बोल सकते हैं, मगर दे शुड आल्सो कंसीडर द मॉडर्न टाइम चैलेंजेस एज वेल। देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। आप आईपीएल भी खेल रहे, ये भी खेल रहे, वो भी खेल रहे। सचिन प्लेड मोस्ट ऑफ हिज आईपीएल व्हेन लाइक आफ्टर ही रिटायर्ड एंड लाइक he wouldn't play all he never played 3 formats consistently। उन्हें एक ही T20 खेला शायद इंडिया के लिए, वो भी शायद पता नहीं, वो साउथ अफ्रीका वो पहला वाला, आई थिंक दैट्स द ओनली वन। सो it's that's why I don't compare it. If you're looking current, then you have to look at current, and Virat Kohli is the modern time great batsman. In individual formats, I have different opinions for who I think is the best players, but overall Virat Kohli is Virat Kohli as well. Ferreira yesterday was superb, and Alzari Yorkers were just too good. Did you guys notice that in that game, Alzari ko Darren Samuel saying what a year's had, this and that, he picked up a wicket and then और चढ़ के बोला, फिर boom, no ball दे दिया। उसमें इन्हें भी बहुत अच्छा डाला रजा हेंड्रिक्स, ही आल्सो बोल्ड वेरी वेल, अच्छा टाइट रखा लाइन को ने। 4 ओवर आई थिंक 14 रन्स कुछ था उसका कल। आमिर खान इज द बेस्ट, वो तो बेकार बैट्स नो हेलमेट से खेला। आमिर खान या लगान अच्छा yeah and captain's knock bro. Please don't say that Sachin favorite great bowler, yep, because he faced what Virat has faced in this era. Rabada, Jofra, Exactly, I was thinking of those and bowlers. just beat them. Yeah, and Virat Kohli played Dale Steyn as well, right? If I'm not, both of them played Dale Steyn, I think, and they both played Jimmy Anderson as well. Yes. So yeah, I've never said that. I know. I mean, a lot of people say it, ki like oh fast bowling ye wo hai. I don't really say that because you have to compare it to the current generation. Also, fast bowlers Wasim Akram in those times they also had breaks. They didn't play T20s and everything, so they were more fresher and thing. It doesn't mean that the modern day bowlers lack skill or anything like that. ये ओपिनियन है। अगर आज की बॉलर्स कोहली एरा का बॉलर्स इतना ही वीक है तो बाकी किधर है? सब 70-80 सेंचुरीज पे बैठा हूँ यार, और हर जनरेशन का उस जन। हाँ बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ। कल कौन जीत रहा है? न्यूजीलैंड पाक। विद दैट वी विल डू आवर लास्ट सेगमेंट टुडे। देखो बात सचिन की हो रही थी, फिर सचिन सामने ला दिया हम आप लोगों के। but yeah, Mustafa, New Zealand versus Pakistan tomorrow, last 1-1 चल रहा है। Yeah, we saw the downfall of Pakistan from a very strong position they were in. They should have actually finished it off, but Rizwan and Babar दो दोस्त बैठ के बात करना शुरू कर दिया पिच पे राडर ने क्रिकेट खेलना, और बैठक में मालूम ही नहीं हुआ कि वक्त कहाँ गुजर गया। वो बोलते ना एक सेट माहौल बन गया था, बातों बातों में टाइम कहाँ चले गया, सुबह चिड़ियाओं के आवाज आ रहे थे, अरे सन वापस आ गया, वैसे टाइप ऑफ सिचुएशन हो गई थी। But yeah, who are your picks for tomorrow from New Zealand and then Pakistan? From New Zealand, I'll go Mitchell Santner, I think, and from
Yeah, I'll go Manchester United, and from Pakistan, बाबर आजम। पॉइंट्स तो बाबर मैंने भाई। देखा, परसों पॉइंट्स मिले थे हमको, अलग है फैंटेसी, अगर आप देख रहे हो तो पॉइंट्स ही देखेंगे। अब वो जिताया नहीं जिताया, वो हमारे को क्या लेना देना है, रन्स होना। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक कभी कोई, या आई थिंक कौन कमेंट करे थे, आपके बोल दो फिक्स। फिनाले ने बोले अंशुल भाई उनका। आई वाज जस्ट फाइंडिंग समवन सेड, किसी का था मेरे पिक्स है। आई थिंक आई एम गोना गो विद फ्रॉम न्यूजीलैंड, आई एम गोना गो विद, let's say, Kane Anna, because Kane Anna really needs a century in his ODIs, and he was very close, बेचारे, but unfortunately, and he looks a very good touch. भाई उन्हें रुकने के मूड में नहीं दिख रहे चिच्चा। And यहाँ से I'm gonna go with Imam ul Haq. I know he's had a bad string of matches, but he's out there to prove himself. Hopefully, if he gets to play tomorrow, but if he doesn't, back up दे दूंगा. If he doesn't get to play tomorrow, then I'll go with Fakhar Zaman. You think 250, 260 will be match winning? Because now the pitches are wearing down. पूरा कराची को तो full use कर दिए, and it's not going to hold up. I feel that batting first again. You should bat first and put pressure on the opposition and take it from there. I don't know if they'll be due or not, but like, that's how I would go. Yeah, I think it's just yeah, good point. And I think 300 अगर मान लिया, 330 40 मान लिया, तो फिर वही, अगर पाकिस्तान बैट सेकंड, देन प्रेशर आ जाएगा पाकिस्तान पे naturally, because it's a 350. Yeah. Yesterday, one man took a catch with one hand. It was in the SA T20. Yeah, 1 million runs. Yeah, क्या है, क्या वो बात, I think Ibrahim भाई let us know कि मिला कि नहीं मिला है उसको। अरे ब्रायन लारा ने परसों के मैच में स्टोरी डाली थी कि वेटिंग टू सी दिस मैन, जब कोहली डग आउट में था। या 100% भाई, जो तरीके का स्टेडियम इरप्ट होता, obviously जब सचिन भी था, बट जिस तरीके से कोहली आता भाई, एक अलग ही चीज, कैसा लगता हवा में, जज्बात आ गए, एंड एनर्जी आ जाती है, एंथुसियास्टिक हो जाते हैं भाई पूरी। एंड ही इज लाइक दैट, ही इज अग्रेसिव, एंड ही, या बोथ करे यार। I, I will pick I tomorrow Williamson and Haris Sohail. Haris Sohail flopped in the last match. Wasn't that Yeah, great? first game he looked good, and yesterday he flopped MVP. मगर हारिस सोहेल पे भी उन्हें प्रेशर बहुत डाल दिया था, बाबर बहुत डॉट बॉल सब पे डाल दिया था भाई, सब पे डाल दिया। वसीम जूनियर एंड आगा सलमान वर द ओनली टू वंस हु स्टूड देयर नेक्स्ट टू हिम एंड सेड, भाईजान पकड़ो, मैं तो मार रहा हूं, बोल के। दे डिडंट केयर। अंशुल आई थिंक भाई दैट्स एलन व्हाट बोले ही नीड। दोनों पाजी बजे न्यूजीलैंड जीतेगा। क्वेश्चन इज कल कराची के विकेट पे क्या होगा? एक महीने से देख रहा हूँ, अभी तक समझ में नहीं आई। मेरे को भी समझ में नहीं आया। देखो, पहला मैच में 250 हमारे चेस हो गया, सेकंड मैच में 250 हमारे चेस नहीं हुआ। आई डोंट नो मैन, बट आई थिंक इट्स स्टार्टिंग टू डिटोरिएट। इट्स गोना बी यूज्ड पिच, दैट्स व्हाट आई फील। एंड या आप कुछ भी नहीं बोल सकते, 300 का भी मैच हो सकता है, मगर मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। एंड इट्स टू मच। आई एग्री विद फैज कि भाई आप एक सिटी में कितने की गेम खिलाएंगे? यू हैव टू, देयर इज मोर स्टेडियम्स देयर। आप कहीं और खिला दो, पिंडी में खिला दो, लाहौर में खिला दो, गद्दाफी ब्रो, गद्दाफी में खिलाओ, गद्दाफी। कहीं भी खिला दो यार, फैसलाबाद में खिला दो। और ये भी नहीं कि भाई क्राउड जा रहे, चलो क्राउड जा रहे, कोई कुछ भी नहीं हो रहा भाई। आई मीन फॉर अ, एंड आई एम व्हाई प्रीटी श्योर नॉट न्यूजीलैंड अट्रैक्ट घर जाके। Faiz, sorry to cut you there, but you see in India where you have like in Ranchi, Rajkot, and Guwahati and stuff like that, right? पहले I don't know कितना होता था वैसा, but if you see like full crowds आते, श्रीलंका से भी खेल रहे हैं, full आते. Whereas in Wankhede and stuff, it'll be full of course, but some 50 over games or test matches won't be full. If you're या playing, छोटे let's say, शहरों में, या छोटे शहरों में बहुत। yeah, Pakistan should attract these small, यार cities. पहले भाई कितने मैच होते थे, फैसलाबाद में भी होते थे, इस्लामाबाद में भी होते थे। कहाँ कहाँ देखे यार अपन तो मैच। मुल्तान में तो प्लेड हालांकि जस्ट few months ago, but like they have enough pitches and stadiums in Pakistan. I don't know why they're just not utilizing it. पेशावर भी है, कितने जगह है भाई। I don't know Yeah. what the politics is, man. कराची में शायद इकोनॉमी वहीं चल रही शायद। कॉनवे, नसीम इब्राहिम भाई सिंह, फिलिप्स की जगह निकोल्स को लेना चाहिए। That's a shout. Phillips has not looked that The good best in in the form. series, especially in one days, and that's concerning for Sunrisers fans like us. But yeah, that's a shout. You could do that. No, he didn't get it as a share of a million. So at end league, they see how many people have taken one hand. Oh, I knew. पहले भी ऐसा कुछ था भाई। देख लो फैज, आपके लिए ये 1 मिलियन नहीं मिलता पूरा, वो डिवाइड होता। No, he didn't get it as it share of a million. So at the end of the league, they see how many. ओहो, क्या होशियार स्ट्रेटजी है भाई, जिस तरीके से पोर्ट्रे करे इब्राहिम भाई कमेंट्री में कि भाई यू गॉट अ मिलियन रैंड। मैं समझा क्या है कि 1 मिलियन रैंड, वही सोचा इतना पैसा कैसा आ गया साउथ अफ्रीका में पिंडा। दे डिवाइड इट। और इनको पाकिस्तान में एशिया कप होस्ट करना अभी,
नहीं होगा मेरे हिसाब से. I think it will be in Dubai, but yeah, they need to try different grounds. That's what I feel, and attract those crowds. कराची में नहीं आ रहे crowds, आप कहीं और जाकर try करो, और वही भाई pitch वही ground भाई, like you know, थोड़ा बहुत वो ज्यादा नहीं वहाँ होगा, पे. लेकिन दोनों पास इंडिया पाकिस्तान खुद से मतलब नहीं खेल के, they're probably going to do it in Dubai again is what I feel. Babar was main culprit and people supporting him that he was lone warrior, but it is should comment he plays for himself. कैसा स्टेडियम है ब्रो ईस्टर्न केप का? बेल्स भी लाइटिंग नहीं है. ईस्टर्न केप भाई. भाई दुबई में मैच देखने जाओगे क्या T20 लीग Hopefully, का? इंशाल्लाह. या इंशाल्लाह. इंशाल्लाह हमारे पाजिया के बाद एक फैस तो जा रहे हैं पक्के. भाई मैं सुना कल शाहरुख खान है कॉन्सर्ट पे ओपनिंग सेरेमनी में. ऐसा के इन हाँ दुबई एंड कॉन्सर्ट में हाँ इट्स शाहरुख खान गा रहे भाई. हैं. क्या पिक्चर ओपनिंग आने चलो, अब सेरेमनी. पिक्चर आने चलो तो गाना गा रहा वो हूँ. पिक्चर चलेंगी, हम जाएंगे 25 जनवरी, पठान आ रहे हैं. बट हमें तो लूट लिया. he's going to be in I think he's in the opening ceremony tomorrow. Now this guy should go and make sure no one catches in the ground. PSL is happening in Karachi and Lahore as weather problem in Multan, Islamabad and Rawalpindi. Okay, fine. If there's a weather problem there, there's still more cities. Go and go to those cities. That's what I would suggest. You know, Yeah, 100%. like you know, there's weather problems in India as well. If you see in Delhi, there's a lot There's of weather problem in Australia also. ऑस्ट्रेलिया में कितना weather problem है. weather problems होते थे, but you still need to attract other crowds and other population. Not And everybody can. you're right, like mostly छोटे शहरों में चाहते हैं यार लोग देखने, like इतनी दिल लगी से कि भाई, because हैदराबाद में तो हमेशा फुल रहता, because हैदराबाद में once in a while होता मैच. Yeah, इतना once in अच्छा a while, स्टेडियम रखे, exactly. But और अगर इतना आप अच्छा स्टेडियम for रखे. example अगर बॉम्बे में आप रखेंगे पूरा सीरीज, it's not going to be all. I don't think it'll be Because full. people are too busy in Bombay, bro. Not like in Hyderabad, will they make time? They'll job को पट मारा था भाई, यार बुखार है बोल नहीं, के बोल मगर मैं देते ये हैं. देखा जो लोग वहाँ बिजी बोलते हैं क्रिकेट के लिए सोप छोड़ देता, कोई भी बिजी नहीं रहता. अब मेरे को बोलो इंडिया पाकिस्तान का अगर सेमीफाइनल पड़ गया, इंडिया पिल्टा कोहली पाकिस्तान सामने कैसा अलग हो? चीज है ब्रो. इंडिया अगेन ठीक है, दैट्स डिफरेंट. ठीक है. अब इंडिया जैसे पाकिस्तान न्यूजीलैंड इंडिया है, राइट, व्हेन आई वेंट इन द टेस्ट सीरीज, सुबह से थी क्राउड, फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइक टू लंच के बाद भाई इतनी क्राउड आ गई थी पूरी, जब तक तो हैदराबाद में बोल रहा हूँ जब मैं देखा मैच. या नो बट आई इन डोंट. जनरल देखो टाइम बनाते लोग, क्रिकेट देखने लोग टाइम बनाते, लाइक स्पेशली इन इंडिया दे क्रेजी अबाउट इट. इवन इन पाकिस्तान दे क्रेजी अबाउट इट. पीपल डोंट माइंड स्किपिंग अ फ्यू आवर्स ऑफ वर्क एंड एंड प्लस गोइंग. ये कराची में तो ये भी एंट्री में क्या की गिच्चियां हैं, आई डोंट नो, सम या वो प्रॉब्लम भी विद. प्रॉब्लम है. Is Dubai League will be successful or not? What do you think? I'll give you my honest opinion. I think because it is in competing with the SA T20, it's difficult to be 100% successful, because you know you have a lot of players playing there. Oh, यहाँ पे split है. I hope that it is successful. Lekin then again, it depends on the pitches. The pitches in the World Cup itself were poor. Now in this league, how will the pitches be? Then the players on display. It's split. You'll have like Moin Ali and these guys playing, but then you don't have the other players that are playing in the SA T20. You have some in the Big Bash. Some are playing international series. So I think it's difficult. Let's see what happens. I cannot make a judgment until the tournament's done, but I can give you my opinion what I think might happen. Yeah, and I think South Africa में अभी सीजन भी अच्छा है, तो लोग आके बैठ के बंदखा मारने आ रहे हैं. अब दुबई में अगर अपन देख रहे, cricket is not a very popular sport. Maybe it is growing, probably है काफी Indian Pakistani nationalities which will come and watch probably. And फिर वही होता, corporate boxes दे देते, मगर ये फिर वो दे आपको देते. इंडिया पाकिस्तान प्लेयर्स भी होना, राइट? वो भी नहीं है. वो भी नहीं है, exactly वही है, है crowd यूसुफ puller. पठान ये वो है, मगर फॉर But एग्जांपल potential crowd pullers कोई नहीं है यार. अगर बाबर खेल रहा था या लाइक बुमराह हम लोग खेल रहे थे, तो फिर क्राउड पुलर्स आ जाते. मोहाली में तो होता ही नहीं, वहां भी बुरा हाल है. इस साल आईपीएल होगा शुक्र है अब. अच्छा हाँ, मोहाली में भी टाइम वगैरह नहीं, तो मोहाली ऑलवेज यूज्ड टू गेट अ टेस्ट मैच. आई रिमेंबर जब मैं स्कूल में था वहां पे रहते थे. जडेजा का ट्वीट चेक करो, चेक कर लो एंड देन वी विल बाउंस. जडेजा का ट्वीट, don't say anything, just smile बोला उन्हें. अच्छा, I think he's talking about Akshar Patel or what? No, I don't know. We'll have to discuss. I have no clue what's happening. Where should we watch Ronaldo versus Messi on 19th, please? Come to Saudi Arabia. That's where you can watch it, man. All the action is here. You come to Saudi Arabia, Riyadh, and just sit anywhere in the cafes and just watch it. But I think there will be streams online. If you search on Reddit or if you search on Google, you will have streams to watch that game. It's going to be, I think, Nasser and Hilal are going to make a team, and they're going to play against PSG. Are you going to cover women's IPL auction February?
Yes, inshallah, that's our plan. We will, and hopefully, we'll cover the Women's World Cup also in February. Manjrekar also asking about Jadeja versus Aksar in commentary. Hmm. That wraps it up. I think, guys, thank you so much, Chirag bhai, Vinesh bhai, Ibrahim bhai, Gurnur Paji, Anshul bhai, and Punter, Ashish, Vinay, everybody who's joined us today. Thank you so much. We really appreciate all your support, all the comments, questions. बहुत मजा है आप लोगों से बात करने में. And कल फिर से जुड़ेंगे. पाकिस्तान न्यूजीलैंड का गेम है वो डिस्कस करेंगे. फिर we'll discuss a bit about India's last game, and if there's any squad announcements or anything, we'll discuss that. We don't know exactly when that's going to be. Until then, enjoy. There's a Premier League game going on now. Chelsea versus Fulham starting in 2 minutes. It's a London derby. It's going to be a good atmosphere at Craven Cottage. So do watch that. I think the South SA T20 game is done. First, we'll just give the recap. Capitals have won by 23 runs. I mean, Sunrisers reached 170, not bad. Tom Abel and James Fuller with a very good cameo, 27 of 12. So they got to a decent score, but I think it's with the ball where they lost it. When you had them 100 for 5, that's where you take wickets. And even if you're not taking wickets, I think the economy rate was too high, and the death overs is where they lacked. And credit North to like Arrow, 4 overs, 18 runs, and 2 wickets. Man, that's incredible. ओके भी वेन पांडेल वो बॉलिंग अटैक है और हमारी बॉलिंग अटैक देखो भाई. तो समझ जाओ कि भाई हर जगह हैदराबाद की टीम वीक हो रही. बताओ खाला को, समझाओ दीदी को तुम्हारे. आई थिंक आईपीएल में बहुत तगड़ी टीम है हैदराबाद की. अब है, अब जाके है थोड़ी बहुत, बट लाइक स्टिल अब वी क्या वी हर वक्त थी. लास्ट ईयर देखो, दे ओवरपेड ऑन प्लेयर्स, यंग टीम थी एंड एवरीथिंग, बट अदरवाइज सनराइजर्स का रिकॉर्ड देख लो, दे आर ऑलवेज इन प्लेऑफ्स मैन, फॉर लाइक 1 or 2 years here and there. that is the never die mentality Hyderabad has No, probably. they have good players. They always Hyderabad Sunrisers always have good players. I prefer Sunrisers more than Deccan Chargers, bro. Actually, I would say bowling department maybe. No, bowling was पहले उसमें शाहिद अफरीदी पागल हो गए हम लोग. एडम गिलक्रिस्ट, फिर कौन था, हर्षल गिब्स, अरे चमिंगा साइमंड्स बीच में, मगर कोई थे नहीं. कौन था तो ओपनिंग बॉलर, कौन था वो, Venugopal. Chaminda Vasta. मगर एंड ऑफ हिज करियर था यार वो. Adil Rashid also in Pretoria Capitals bowling attack, man. Don't tell me this. Where are the players in the Sunrisers? But watch out, good youngsters performed today. I mean, not youngsters, but like some players that we don't know. Like I don't know. Like personally, I've not seen them play. I've got to know them in this tournament. So keep on watching. And I like the crowds coming in. The weather looks good. Grounds are nice. I know this ground, I think one of our friends were saying it's not that great. Like, overall, I like the action which is happening in South Africa. पंत के बिना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में क्या होगा, कौन विकेट कीप होगा, उसके जाने के बाद 2 बंदे चाहिए उसकी जगह फिर करने को. बहुत बिल्कुल सही बात है. ऋषभ पंत has been immense for India in Test cricket, especially. He's been outstanding, as a wicketkeeper, as a batsman. अब कौन रहेंगे, शायद केएस भरत लेंगे वो स्लॉट. I don't know. केएल राहुल शायद अगर कीपिंग करेंगे तो करेंगे, पता नहीं, मगर I don't know. Let's see, in a month or so we'll have more information. Feb mid में, because the series will start end of Feb, right? First, so I think 2-3 हफ्ते के बाद we'll have a better understanding, hopefully. जो वीक कर सके और उसका जैसा बैट कर सके, जो विकेट कीपिंग कर सके और जो बैटिंग कर सके, नहीं उसके तरह मुश्किल. अब देखो, फैज ईशान किशन बोल रहा लाइक फॉर लाइक है, लेकिन फिर भी आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन थिंग्स. देयर इज अ डिफरेंस ऑब्वियसली इन टेम्परामेंट, बट मेरे को फिर भी ईशान किशन से थोड़ा बहुत देखो भाई, आप ट्राई तो करो उसको, उसमें प्रॉब्लम क्या है, लाइक इट्स जस्ट वन मैच मे बी और समथिंग, बट या अपोजिशन तगड़ी है, दैट इज वन मोर थिंग. या आई अंडरस्टैंड व्हाट यू कमिंग, वेयर यू कमिंग फ्रॉम, बट ये फिर वही केएल राहुल ही होगा फिर मेरे ओपिनियन में. अभी के हिसाब से केएल राहुल इज द ओनली वन हु इज देयर. वन अदर इज केएस भरत को नहीं ट्राई करेंगे यार. बॉर्डर गवास्कर में कैसा आप एकदम इतनी बड़ी सीरीज में आप वही होगा कि भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हाथ में है, तुम लोग केएस भरत को ला लिए, पागल है क्या? नो चांस. ईस्टर्न केप का जर्सी कैसा लगा? बेहतरीन. Orange Army always for the win. But मैं एक चीज नोटिस करा, India's back to the blue, man. Like, it just hit me today. Even though मैं T20s भी देख रहा हूँ, वनडेज भी देख रहा हूँ, they're back to the darker blue, not the light blue. I prefer this. I want to buy it. Yeah, है किलर के वेबसाइट पे है, जाके खरीदेंगे अपन. I like this color better than the light blue last one, the MPL one, right? Yeah, वो थोड़ा. There was MPL navy blue also. I like that one as well. जो extra darker blue जो है ना.
92 का जो रेप्लिका था मेरे को बहुत अच्छा पसंद वो हुआ। ओके वो वाला वन मैं उसके बाद वाला बोल रहा हूँ द वन विद द उसके डार्क ब्लू बाद एंड में द पता ऑरेंज नहीं था किलर वाला is just because they changed the sponsor like but this color was the same color they wore in the Asia Cup, the same jersey, या just they changed the sponsor. I'm talking about the T20 T20 World वर्ल्ड Cup, कप उसमें लाइट ब्लू था। कलर की बात कर रहा हूँ यार, वो जर्सी की नहीं, तो मतलब मैं समझ डिजाइन गया की। ना स्पॉन्सर हाँ, कलर अलग है। जो which भी है यू लाइक color, दिस वन राइट yeah, which color do you prefer? There are two jerseys that I like from India. One is the 2003 World Cup one, and the ones with the birds flying across. I think that was like Dravid ka yaad hai? You like the light blue, you like the light blue. I, light blue is good. Any color, bhai, anything chalne do. But in terms of jersey, which are more iconic ones, are those two for me. Me, I love the 2009-10 में जो like the dark blue. Oh. Zahir Khan वो लोग पहन लेते. They changed it before the 2011 World Cup because that was unlucky हाँ. jersey and they didn't do well in World Cups with that jersey. But I love that 2009 में कैसा उतरे थे? गुरनूर बाजी का कमेंट पढ़ो यार वो जर्सी जर्सी में में बंदी बंदे तो तो भाई होंगे खेलने वाले। बात तो सही है, मगर रुकने बाद आप देखो विराट कोहली कैसा लगता है, लाइक डार्क ब्लू जर्सी में पूरा टक वक, क्या हैंडसम दिख रहा था। 2016 T20 World Cup India, man, no, I did not like that. I actually, someone got it for me. I actually have that jersey, I think somewhere, but I can't wear that, man. I didn't like that. मेरे को याद नहीं आ रहा मैं तुम्हारा कौन सी दिया मेरे को याद नहीं आ रहा कोहली की दिया था देखो कनाडा में कोई दिए थे, I think. But अच्छा actually, ये वो बेकार है जी the वो one वैसे आई you नो व्हिच got वन यू me, टॉकिंग I still wear that, the Virat Kohli one. That आई वाज लाइक that's a मैं good कौन सी मैं 2016 में 2014 या 13 में दिया था लाइक वेट व्हिच वन डिड आई गिव दिस गाय नहीं, लंगा 16 वाला दिए थे, 16 वाला दिए थे मेरे को। बढ़िया अभी तो रिसेंटली मैंने खरीदा लास्ट वन आई बॉट वाज 2011 वर्ल्ड कप उसके बाद ओके, तो लिया इसने आई थिंक हम बोर कर दे रहे सबको, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल जुड़िए हमारे साथ, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का करेंगे डिस्कस, और जो भी टूर्नामेंट, कल दुबई का भी है तो वो भी बात कर लेंगे, और फिर साउथ अफ्रीका का भी बात कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच। 2019 वर्ल्ड कप जर्सी इंग्लैंड के मैच में, ओहो वो बेस्ट था, वो जबरदस्त। तो धोनी भाई का था ना इट्स लास्ट क्या था वो, धोनी भाई का क्या था उसमें? It was a good jersey. I like that jersey. That was nice. I'll give you that, Anshul bhai. Nice differential there. Take care, guys. फिर कल जुड़िए हमारे साथ. Make sure you like and subscribe. Share it with your friends as well. And whatever comments, questions you have, you can also comment after the video. If not watching live, you can comment and we will reply to you, or message us on Twitter or Instagram. Until then, have a good night. Enjoy the rest of your night and take care. Thank you, Faiz, for joining me as well. And I will catch you tomorrow. Take care.